to come and recite their poems here, right? So मैं सबसे पहले आग्रह करती हूँ अनुपमा बासुमात्री जी से कि वो मंच पर आएं और कविता पाठ करें। नमस्कार। साहित्य अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हम लोग को इस मौका देने के लिए। So I'm going to read my first poem in English translation, translated by Pratibha Saria, and I will going to read in my Assamese version only one poem because time is short. So one poem in Assamese I'm reading. First one, Kobita Bisari Furute. কবিতা বিচাৰি ফুৰোতে কেতিয়া যে জীৱনটোৱে কবিতা হ'ল মই নাজানিলো। হৃদয়ৰ জখমবোৰ সজাই তুলিবলৈ শব্দ বিচাৰি ফুৰোতে কেতিয়ানো জখমবোৰেই হ'ল হৃদয়ৰ নামান্তৰ মই নাজানিলো। কবিতাৰে সপোন এটা বিচাৰি বৰষুণৰ মাজে মাজে মেঘ আৰু কুঁৱলীৰ আৰে আৰে পাহাৰ শিখৰৰ অতিথিশালাত শিলাময় উপত্যকাৰ জোনাকত নিৰ্জন পাহাৰৰ একাকিত্বত ঘূৰি ফুৰোতে কেতিয়ানো জীৱনটোৱেই হৈ পৰিল এটা ধুঁৱলী কুঁৱলী সপোন মই নাজানিলো। জীৱনটোক পুনৰ যাপন কৰিম বুলি তোমাক বিচাৰি ফুৰোতে কেতিয়ানো তোমাকো হেৰুৱালো মই নাজানিলো। মইনো কাৰ পৰা কি বিচাৰিছিলো থকাখিনিও আনক বিলাই দিওঁতে কেতিয়ানো নিজেই হলো সৰ্বশান্ত মই নাজানিলো। হৃদয়ত এতিয়া কেৱল শূন্যতা কেতিয়ানো হৃদয়খনো তোমাক দি পেলালো মই নাজানিলো। এপদ এপদকৈ সকলো হেৰুৱাই কেতিয়া যে মই এনেকৈ নিশ্চয় হলো মই নাজানিলো। Assamese accent आप लोगों ने सुन लिया. Now I'm going to read in the English translation. The quest of poesy. On the quest for poesy, little did I know poems nestled in me and made me so. While looking for words to array all my hearts, the hearts named and spelled out my heart. Through the falling rain, shaded by cloud and mist, and in the inn at the top of the hill, I sought with verse, a dream in moonlight, on the hilly bourne and vale, foraging in the solitude of the hills. I never learned how life became a hazy dream. Seeking you to live life again, I never realized I lost you even. Whatever did I want from others? Giving away what all I had to offer, I never learned how it left me drained. Emptiness rose in my heart now, never knowing when to you I had given it away. Giving it all beat by beat, I never learned how it felt me empty and hollow. अब मैं हिंदी में पढ़ना चाह रही हूँ 3 कविता। टाइम समय कम है, हिंदी में पढ़ूंगी। असमी सुन लिया है आप लोगों ने एक बार। तो मैं एक सनोवर पेड़ की तरह खड़ी रहती हूँ सभी मौसम के तमाम थपेड़ों के साथ लड़ती हुई। तुमने कहा था सनोवर पेड़ का मतलब ही एक रहस्यमय हलचल, जबकि सनोवर पेड़ की होती है एक अनूठी खूबी, कल्पना से परे एक आकर्षण, हजारों रुकावटों को सनोवर पेड़ सहन कर सकता है और इसके पास है अनोखी सहनशीलता। परेशानियों को यहाँ समेट कर सुला कर रखता है सीने के अंदर। सनोवर पेड़ पसंद करता है दुनिया की तमाम तरह की खूबसूरती को, बारिश की फुहार, हेमंत की चटकीली रंगत, सर्दी की उजली बर्फ और बसंत में खिले फूलों को। सनोवर पेड़ मेरे जन्मदिन का प्रतीक। मैं चाहती हूँ अपने दोस्तों और परिजनों को, जाने अनजाने हजारों लोगों को, सताए और उपेक्षित लोगों को
कहते हैं सनावर पेड़ के प्रतीक के साथ पैदा होने वाले आमूमन होते हैं प्रतिभाशाली, ईमानदार और ज़हीन, भरोसेमंद और वफादार। आज की तेरी मेरी पहाड़ी राह पर तुम्हारे साथ भ्रमण करते हुए गुजरी थी हजारों गगनचुंबी सनोबर पेड़ों के बगल से। हवा में उड़ उड़ कर आई थी ख्वाब सरीखी कोमल बर्फ और सनोवर पेड़ों से लिपट गई थी। है मेरे प्रिय बंधु, जीवन की ऊंची जमीन पर मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम आकर मुझे समेट लो हृदय की कोमलता से। दूसरी कविता। कोई बात नहीं, तुमने संदेशा भेजा, पीच फूल खिले हैं तुम्हारी पगथली में, साथ ही भेजा अनेकों चित्र। आह, कोमल गुलाबी पीच फूल ने आकाश की तरफ बाहें पसार कर पंखेरुयों को खोला है। सीडर, चेरी और सेब के दो पैरों की खबर भी सुनाई आज। तुम्हारे शहर में स्वर्ग तक जाने की राह है। उजली बर्फ से ढके फूल सर्दी गुजारने के बाद अब शायद पीच फूल ने गुलाबी बनाया है तेरी मेरी राह को। पीच फूलों के खिलने के मौसम में मैं तुम्हारे करीब आऊंगी अगली बसंत में, और तुम्हारे साथ भटकती फिरूंगी फूलों की वादियों में, सेब के बगीचे में, बर्फ वाले सीडर वन में, सनबर पेड़ के बगल में बैठकर अपने दिल में छुपी बातें खुल कर करेंगे एक दूसरे को। अभी भी मुझे राह देखनी पड़ेगी शरद, हेमंत और शीत ऋतु का लंबा समय। कोई बात नहीं, ओ मेरे प्रिय बंधु, तुम मेरे करीब ही हो, हर मौसम में, हर एक पल में नाजुक हवा की तरह मुझे समेट कर। तीसरी और लास्ट कविता। जीवन की खोज का किस्सा। मेरे सफर के खिलाफ बह रही है हवा, दूर जंगल के ऊपर से पंछियों का झुंड उड़ रहा है। रात तक तूफान आने के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे जंगल के बीच से ही तय करना होगा रास्ता। उत्सोती पगडंडी से होकर मैं अकेली ही आगे बढ़ रही हूँ। यह पगडंडी भी मेरी तरह तन्हा है। टीले के बगल से ऊपर की तरफ मोर एक तिलिस्मी और गमगीन कविता की तरह लग रहा है। जीवन की खोज का एक नया किस्सा लिखूंगी आज। एक सुनसान जंगल, एक तन्हा रास्ता और एक तन्हा मुसाफिर के जोखिम भरे दर्द से बोझिल अभियान की सिरहा देने वाली कहानी जब तक पूरी नहीं हो जाती, तुम जगते रहना प्रभु। ये हिंदी अनुवाद किया था मेरे दोस्त दिनकर कुमार ने। थैंक यू, थैंक यू ऑल। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और अब मैं निमंत्रण दूंगी शशिकांत बनाजी को कि आप मंच पर आएं और कोंकणी भाषा में कविता पाठ करें। नमस्कार। मैं गोवा से आया हूँ और एक कवि ने बोला है, गोवा हमारा गोवा, यह राज दुलारा गोवा, सपनों से प्यारा गोवा, जीना सिखाता गोवा। ये जीना सिखाने वाले गोवा से मैं इधर आ रहा हूँ। मैं पहली जो कविताएं हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली कविता। इस दिन सब जहां खुदाई चल रही है। कोकणी में पढ़ता हूँ। सगळेच फोडपाक लागल्यात रस्ते, सगळेच फोडपाक लागल्यात रस्ते, कोण करता स्मार्ट सिटी,
सगळेच फोडपाक लागल्यात रस्ते. कोण करता स्मार्ट सिटी, कोण फोडटात रस्ते केबल घालपाक, कोण फोडटात रस्ते पायपा घालपाक, कोण फोडटात रस्ते माती तपासपाक. फोडटात जो तो फोडीत आसा. फोडप आता सच्चेंच जाला. फोडप आता सच्चेंच जाला. अस्थिर स्थिर करपाक फोडटात, अस्थिर स्थिर करपाक फोडटात. पूण स्थिर केल्ले परतून फोडटात, पूण स्थिर केल्ले परतून फोडटात. तकली लेगीत फोडली तरी दिसना तांची, तकली तरी फोडली तरी दिसना तांची निश्ठा. देखून आता तांणी तकल्योच फोडपाचें सोडून दिलां. देखून तांणी आता तकल्योच फोडपाचें सोडून दिलां. इसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर सोनिया सिरसाट ने किया है। सभी करने लगे हैं, सभी करने लगे हैं खुदाई सड़कों की। कोई बना रहा है स्मार्ट सिटी, कोई बना रहा है स्मार्ट सिटी, कोई कर रहा है खुदाई सड़कों की केबल जमाने के लिए। कोई कर रहा है खुदाई सड़कों की केबल जमाने के लिए। कोई कर रहा है खुदाई सड़कों की जमाने के लिए पाइप। कोई कर रहा है खुदाई सड़कों की मिट्टी की जांच के निमित्त। कोई कर रहा है खुदाई सड़कों की मिट्टी की जांच के निमित्त। लगातार चल रही खुदाई, लगातार चल रही खुदाई। खुदाई में लगा है हर कोई, खुदाई में लगा है हर कोई। आए दिन होती है खुदाई, आए दिन होती है खुदाई। अस्थिर को स्थिर बनाने, अस्थिर को स्थिर बनाने होती है खुदाई। करते हैं तोड़फोड़, होती है खुदाई, करते हैं तोड़फोड़। स्थिर की भी करते हैं पुन्ना तोड़फोड़, स्थिर की भी करते हैं पुन्ना तोड़फोड़। फोड़ दिया जाए सिर तभी भी दिखाई नहीं देती उनकी निष्ठा। फोड़ दिया जाए सिर तभी भी दिखाई नहीं जाती उनकी निष्ठा। इसलिए अब उन्होंने उन्होंने सिर फोड़ना भी छोड़ दिया है, सिर फोड़ना भी छोड़ दिया है। दूसरी कविता है नंदी बैल। एक कोंकणी में कविता है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नहीं तो मुझे मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा, बाद में कोंकणी में पढ़ूंगा। देव धर्म के नाम पर टाइटल नंदी बैल। हाँ, हिंदी में भी। देव धर्म के नाम पर, पुरखों के नाम पर, देव धर्म के नाम पर, पुरखों के नाम पर, ढुम ढुम ढुमाक परंपरा के अनुसार, ढुम ढुम ढुमाक परंपरा के अनुसार हिलाते डुलाते, हिलाते डुलाते सिंह पर सजे लटकन, सिंह पर सजे लटकन, दाहिने पैर से करते हुए अभिवादन। आ खड़ा हुआ दरवाजे पर नंदी बैल, आ खड़ा हुआ दरवाजे पर नंदी बैल। मां ने सिंदूर पुष्पों से, मां ने सिंदूर पुष्पों से की पूजा अर्चना नंदी की। सुहागन के नाते, सुहागन के नाते किया प्रणाम 5 बार। नंदी वालों ने गाथा सुनाई पुरखों की, नंदी वालों ने गाथा सुनाई पुरखों की। फिर भी फिर भी जब 5 वर्ष पूर्व बेचे हुए, फिर भी 5 वर्ष हुए बेचे हुए नंदी बैल को दरवाजे पर खड़ा देख गौशाला में, गौशाला में चारा चबाते हुए उसके सांड ने, उसके साथी सांड ने लिया ढलकार। तब तब नंदी बैल पड़ोसी के दरवाजे पर सिर झुकाए मांग रहा था भीख, मांग रहा था भीख। ढुम ढुम ढुमक, ढुम ढुम ढुमक। इसका कोंकणी मैं आपके सामने करता हूं। देवा धर्माच्या नावानं आजा पंजाच्या नावानं, देवा धर्माच्या नावानं आजा पंजाच्या नावानं डुम डुम डुमाक। वर्षावळी प्रमाण शिंगावयले गोणे हालयत धुलयत, वर्षावळी प्रमाण शिंगावयले गोणे हालयत धुलयत उजव्या पायान नमस्कार करीत, उजव्या पायान नमस्कार करीत नंदी बैल दारान उबो। आवशीन पिजर फुलांनी नंदीची पूजा केली, आवशीन पिजर फुलांनी नंदीची पूजा केली। सवासणीचो मान राखीत, सवासणीचो मान राखीत 5 फावटी पायां पडली। ठाकरान आजा पंजाची कुळी वाचली, ठाकरान आजा पंजाची कुळी वाचली। पूण 5 वर्सां पयलीं केलेल्या
हियर इलेक्शन्स कम. पण 5 वर्सां पयलीं इकलेल्या नंदी बैलाक परत दारान पळोवन, पूण 5 वर्सां पयलीं इकलेल्या नंदी बैलाक परत दारान पळोवन गोठ्यांतली गवण करकरायत, गोशाला की गोठ्यांतली गवण करकरायत त्याच्याच वांगडच्या बांगर बैलान धेकर गाजयलो, ताच्याच वांगडच्या बांगर बैलान धेकर गाजयलो. तेव्हा नंदी बैल, तेन्ना नंदी बैल शेजारच्या दारान भीक मागतालो. आज्या पंजाच्या नावानं, देवा धर्माच्या नावानं, आज्या पंजाच्या नावानं, देवा धर्माच्या नावानं डुमडुमडुमाक. कहाँ पहचान लेता है रक्त, कहाँ पहचान लेता है रक्त. आज रक्त को रक्त होता है लाल रंग का, रक्त होता है लाल रंग का. पर आजकल बदलने लगा है रंग, पर फिर आजकल बदलने लगा है रंग रक्त का. रक्त रक्त से करने लगा है बैर, रक्त रक्त से करने लगा है बैर. आम तौर पर रक्त जम जाता, आम तौर पर रक्त जम जाता तो तुरंत हो जाता था प्रवाहित, आम तौर पर रक्त जम जाता तो तुरंत हो जाता था प्रवाहित. आज का रक्त घोटने लगा है गला, आज का रक्त घोटने लगा है गला रक्त का. इसलिए मैं इन दिनों करता हूं रक्तदान, करता हूं रक्तदान. जिसे जरूरतमंद को कहाँ पहचान है रक्त का. थैंक यू. एक सितारा, एक सितारा, एक सितारा टंगा हुआ है घर की छत पर, एक सितारा टंगा हुआ है घर की छत पर. घने अंधकार के भावसर, घने अंधकार से भावस्वर, उजाले के तरफ, उजाले के तरफ ले जाने वाला, उजाले के तरफ ले जाने वाला है अपना वह इतिहास उस सितारे को, है अपना वह इतिहास वह सितारे का. दीपावली हो या क्रिसमस, टंगा रहता है वह फिर, टंगा रहता है वहीं पर हर रात. है यह वह दीपावली, है यह दीपावली और क्रिसमस सितारे की. जोर जोर से सात दीपावली पर, जोर शोर से सात दीपावली पर तशरीफ लाए नरकासुर. या फिर क्रिसमस के मौके पर, या फिर क्रिसमस के मौके पर घुमट के ताल पर, घुमट के ताल पर भरकर जेबों की खुशियां पधारे सांता क्लॉज. फैलाता नहीं हाथ, फैलाता नहीं हाथ कभी सितारा किसी के आगे. ईद के आधे चांद की चांदनी, ईद के आधे चांद की चांदनी को पाने के भी नहीं है उसे चाह. न है सितारा कभी, न ये सितारा कभी हंसता है, न रोता है, न करता है कोई गिला. न भेजा जाए ग्रीटिंग तो भी नहीं है उसे कोई शिकायत और नहीं कोई इंतजार, नहीं है उसे कोई शिकायत न कोई इंतजार. समदर्शी सितारा, समदर्शी सितारा देख रहा है किसी को चुराते हुए रंगीन कागज और बॉस की छत उसे ओढ़ने के लिए. इसलिए इसलिए वह सिर्फ टिमटिमा रहा है. एक सितारा टंगा हुआ है घर के छत पर, घर के छत पर. धन्यवाद. बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच. हमारा ये सत्र 1:30 बजे तक है, तो थोड़ा सा हम समय सीमा का अगर ख्याल रखें तो हमारे जो सभी पोएट्स हैं उन्हें हम सुन पाएंगे. उसके अब मैं न्योता देना चाहूँगी आशंबम नेत्राजीत जी को कि प्लीज़ आइए और अपना कविता पाठ कीजिए. Firstly, my poem is Manipuri language next to English translation. Lamdamsigi wari. Lamdamsigi wari di sing na question kraba. Pik kraba tampak lamdugi. Togdok kaya kaya duni. Lamdamsigi wari di sing na question kraba. Pik kraba tampak lamdamdugi. Togdok kaya kaya duni. Kananasu han yengbidraba.
ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯐꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯐꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯌꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯛ ꯎꯔꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯨꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ Next, Manipuri translation. Lamdamsiki wari, tale of region. This is the tale of this region. This is the tale of this region. The tale of tiny vale. The saga of a small region, encircled by the range of blue hills. This is the tale of this region. The tale of a tiny vale. The saga of a small region, encircled by the range of blue hill. This is the tale of the destitute, the tale of the ill-clothed, the rumbling of the agents, the thundering of the thirst. All are the absorbed and the diluted. All are the absorbed and the diluted. Almost the dark wood and the blue hills. Innocent soul, surprised and the subdued. Innocent soul, surprised and the subdued. Their cries for justice and the liberty are all within the range echoing, are all within the range and echoing. All are the subordinate by the burning rains. All are the subordinate by the burning rains. This is the tale of this region, the tale of this region, the saga of an unknown region. Next poem, Manipuri poem, Awonba. Tamlaba khungangi chiklaba lamangda, sanjabungi asangba napi mathaksa, sena songna sanana haurai, salup sanlam chingi marakta. Aina khoidana yengjakhi, anganba ayukta, usiyeksingna pairakpa, nimidang wai, salup sanguna karakpa, isingong tamna ising sokpa sanaba, pareng kayada ningtamna khiba. Sena songna telanga paijaba, ꯎꯐꯨꯜ ꯍꯧꯔꯨꯕ ꯑꯆꯤꯛꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯟꯒꯥꯔꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯡꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯆꯔꯨ ꯃꯄꯨꯟ ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯃꯄꯨꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯜꯂꯨꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯈꯨꯠꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯂꯅꯤ ꯏꯊꯛꯁꯤꯗ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯪꯕꯥꯅꯕ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯪꯕ ꯁꯪꯖꯥꯕꯨꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯪꯂꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯪꯕ ꯁꯪꯖꯥꯕꯨꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯪꯂꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯁꯨ ꯁꯂꯨꯞ ꯁꯪꯒꯨ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯦꯞꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯁꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯝꯄꯥꯛꯃꯒꯤ ꯇꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯛꯅ ꯌꯦꯡꯅꯍꯧꯏ ꯑꯁꯪꯕ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯕꯨꯠꯀꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯑꯁꯪꯕ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯕꯨꯠꯀꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯍꯧꯕ ꯀꯅꯥꯗꯕꯨ ꯇꯥꯏꯅꯔꯅꯤ. Next, English translation, Awonba, evolution. Amidst the green of the village far off, amidst the green of the village far off, amidst the grazing ground calm and quiet, amidst the heart of the country cattle, I was born and brought up there. Morning bird flying high above, morning bird flying high above, evening herds returning home in groups, murmuring rivulet, I play with little pot, children's life free from bondage. A child pollution life I did enjoy in my group. With thread in heart, I did let my kite free. With thread in heart, I did let my kite free, soaring higher and higher in the blue. Laden with the haystack and the firewood, blow cart towed along the dusty path, sitting upon the Lord happily and gaily, sitting upon the Lord and happily gaily.
I wish I could touch the blue. I wish I could touch the blue. Alas, gone are those days. Green meadows are beyond my reach. No more are the kite over there. No more are the children in the green. Only roadside cattle swing and brooding are seen weeping and grudging at the newcomers. Low under the stamping heavy boot, low under the stamping heavy boot, downtrodden are the brothers of the green grass, all are growing and wailing in the wilderness. Against whom shall I protest? Against whom shall I protest? Thank you. Everybody, thank you. थैंक यू सर, ब्यूटीफुल पोएट्री रेसिटेशन। अब मैं आग्रह करूंगी अद्याशा दास जी से कि वो यहाँ मंच पोडियम पर आएं और अपना कविता पाठ करें। Thank you very much. Namaskar, and a very good afternoon to all of you present here. The chair of this session, my fellow poets, and the writers in the audience. At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me to represent my language, Odia, in the multilingual poets meet of the Festival of Letters. What I will I've been planning to do is I will read a poem in Odia first to give you a slice of the Odia language, and I'll present the Hindi translation, and we'll go on from there. The title of my Odia poem is Prarthana, which means prayer. Moro Prarthana ekanta nijara ati gopanya. Moro Prarthana ekanta nijara ati gopanya. हताशा और संतापरे मु जळुथाए प्रार्थना करिबा बेले अनुमेय करुथाए मते विपथगामी कराइबार प्रलोभन मोर इच्छा कामना ओ वासना केवल मोर एकांत भावे मोर प्रतिदिन जीवन जंजाल भितरे अपराह्न जेतेबेले गोधूली को आलिंगन करे मंदिरर सुउच्च मुखाशालारे किंबा शयन गृह और रंधाघरर फांकरे जहीं तहीं जेकोसी स्थान रे उत्थित कर मते पूर्ण कर मोर इच्छा केते सुविधावादी तुमे पथर परी नीरव रहिबा किछि न कहिबा जेमिति लेखा होईछि तुम भाग्यरे आम समस्तक सह मायाजालर चुक्तिपत्र रे संतक रखिबा कौन तुम अटल प्रतिज्ञा प्रतिबदलरे नारिकेलटी खंडे पात वस्त्र एवं एक उज्ज्वल द्वीपशिखा जार नाम जीवन. The Hindi translation of this poem, which has been taken from my anthology of Odia poems Anucharita, has been done by Dr. Rajendra Prasad Mishra. प्रार्थना. मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरी है. मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरी है, अति गोपनीय. हताशा और संताप से मैं जलती हूँ. प्रार्थना करते वक्त एहसास करती हूँ मुझे विपथगामी कराने के प्रलोभन मेरी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं सिर्फ मेरी है. मेरी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी. रोज रोज की आपाधापी के बीच जब अपराह्न गोधूली को बाहों में भरता है, जब अपराह्न गोधूली को बाहों में भरता है, मंदिर की ऊंची मुखशाला में या शयन कक्ष और रसोई की सांध में, जहां तहां कहीं भी जगाओ मुझे, पूरी करो मेरी इच्छा. कितना सुविधावादी है तुम्हारा पत्थर सा मौन रहना. कुछ न कहना मानो लिखा है तुम्हारे भाग्य में. कुछ न कहना मानो लिखा है तुम्हारे भाग्य में. हम सबके साथ मायाजाल सा समझौता करना क्या तुम्हारी अटल प्रतिज्ञा है? बदले में एक नारियल या एक रेशमी वस्त्र और एक प्रज्वलित दीपशिखा जिसका नाम जीवन है.
बदले में एक नारियल या एक रेशमी वस्त्र और एक प्रज्वलित दीपशिखा जिसका नाम जीवन है। थैंक यू। Since you now have heard Odia and we have a paucity of time, I will read out a few poems, one more in Hindi and two more in English. So the second poem, the Odia name is Anucharita, that has been taken from my Odia anthology called Anucharita. And once again, it has been translated by Dr. Rajendra Prasad Mishra. अनुच्चारित। पहाड़ में मैं एक पगडंडी बनूंगी, शायद वो आए। पहाड़ में मैं एक पगडंडी बनूंगी, शायद वो आए। उस पगडंडी के दोनों ओर चाय बागान बन वेलवेट कारपेट सी बिछ जाऊंगी, शायद वो उस पर घड़ी भर बैठ ले। उसके बगीचे में मैं बर्च पेड़ बन जाऊंगी, शायद वो आए और थोड़ी छाया ढूंढे। पाइन पत्तों की नस नस में मैं हवा बनकर बहूंगी, शायद वो आए और पेड़ के नीचे घड़ी भर थकान मिटाए। धरती से चाहे उड़ जाऊंगी आकाश में, फिर से लौट आऊंगी धरती पर। मई महीने के अपराह्न में बारिश की हल्की बूंद बन, शायद वो आए और ढूंढे जरा सी ठंडक। नीलगिरी पेड़ की सपाट सीढ़ी पर कदम रख, आसमान से उतर जाऊंगी। मार्च की सुबह की धूप बन पसार दूंगी खुद को नीलगिरी पहाड़ के अरण्य और उपत्यका में, शायद वो आए और ढूंढे जरा सी उष्मा। वो आया भी पराया पुष्पक यान में, वो आया भी पराया पुष्पक यान में। धूप, बारिश, हवा, पाइन और बर्च, चाय बागान का वेलवेट गलीचा सब बेकार गए। इंसान इंसान के भीतर का संबंध क्षणिक भ्रम के सिवा कुछ नहीं, ये प्रमाणित करके वो इंसान से ऊपर रह गया और सारी धरती को एक अनुच्चारित प्रश्न बना गया। वो इंसान से ऊपर रह गया और सारी धरती को एक अनुच्चारित प्रश्न बना गया। धन्यवाद। And now I will be reading, if time permits, two, otherwise one. And this is my own translation of my own poem from my recently published book, The Yogini Poems. So the title of the poem is Muse. Who painted the ocean in the sky? Nimble fingers camouflaging the waves as clouds, tumultuous and terrifying one moment, soothing shadows the next. Who taught the birds to fly high, spiraling up and down in an intricate dance, racing against the goals they set? Who created the tapestry of love, intertwined minds and bodies, the miracle of the night's drizzle of passion, a profusion of wild dreams, music of moans to ecstatic sighs of surrendering, sharing oneness? Creator, are you my muse? Creator, are you my muse, handing me words and thoughts of your choice, coloring my eyes with your vision, to admire your breathtaking handiwork, bound to you in the primordial bond? Or am I creating you? Or am I creating you, erasing a bit here, adding some more there, putting you on a pedestal, then banishing you into a long exile? Your sea, birds, mountains, human bodies, beautiful minds, all people me. They walk in me in the corridors of my house. When sad, your sea turns pensive. When happy, the cuckoo sings. What is it then? This equation between us? Are you a brilliant reflection of all that I am? My God, my very own? Or do you craft me the way you please? Hold my hand, Creator. Don't you see we have thousand things to create? Don't you see we have thousand things to create before time vanquishes me, vagueness colors me? Let us create the world, create each other a final time. Thank you. A last poem. Do I have time? Yeah. The real life.
life goes on. Despite battlefields and bloodshed, riots and massacres, terrorism and honor killings, despite all that is dark and dreary, life goes on. Life flows by in our home through moody seasons, the sets of crockery changing over time, with members coming and going, the nondescript shop at the street corner, the glistening Taj Mahal in scorching summer, the silent Buddha statues of Borobudur, the forgotten ruins of Angkor Wat. Nothing, nothing and no one escapes the touch of life. Yet, nothingness comes. Like a bolt of lightning, nothingness comes. Like it has happened since eternity. Innocent lives snuffed out for no reason. The emptiness of losing loved ones. The terrifying world around us. And the helplessness of this very minute I. The stream of living goes on. We notice once again forgotten springs, the beauty of each dawn that makes living worthwhile, the birches that outlived harsh winters. We wipe the tears of tragedies and smile at the truant butterflies, like so many lives before us, so many yet to come, like so many lives before us, and so many yet to come. Thank you very much. बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और आज के सत्र के हमारे अंतिम जो पोएट हैं उनको बुलाना चाहूंगी, हरीश करमचंदानी जी। किसी सभा या सम्मेलन में अंतिम वक्ता या कवि श्रोताओं के धैर्य का, उनकी सहनशीलता का एक प्रकार से परीक्षा होती है। मैं कामना करूंगा कि आप इस परीक्षा को बहुत सफलता से पास करें। पहले एक मैं बहुत छोटी सी कविता 2 पंक्तियों की सुनाऊंगा सिंधी में, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन। मैंने इसलिए छोटी कविता चुनी है ताकि सिंधी यहाँ कोई समझने वाला नहीं होगा, लेकिन उसका फ्लेवर मैं देना चाहता था। ब बार एक बार खुश थियो वठी करे फूकणो, ॿियो बार खुश थियो विकणी करे फूकणो। 2 बच्चे, एक बच्चा खुश हुआ खरीद कर गुब्बारा और एक बच्चा खुश हुआ बेचकर गुब्बारा। मेरी कविताओं के नायक अक्सर बच्चे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके की दुनिया बन चुकी है, बड़ों से उम्मीदें शायद कम हो गई हमारी, और बच्चों का और उनका जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, उम्मीदें हमें बहुत ज्यादा हैं। कविता का शीर्षक है कद। जब छोटा था नहीं भूलता था झूठ कभी, करता नहीं था चोरी कोई, पीर पराई से हो जाता था दुखी, करुणा से भरा रहता था मन उसका जब वह छोटा था। जब वह छोटा था जो कुछ पाता मिल बांट खाता था, सभी लगते थे उसे अपने, गैर नहीं था कोई उसके लिए। फिर वह बड़ा हो गया और वह है बड़ा आदमी भी। एक और कविता ये भी बच्चों को लिख रही है। बच्चा सीख रहा है दुनियादारी, बच्चा सीख रहा है दुनियादारी, धीरे धीरे वह मासूम बच्चा सीख रहा है दुनियादारी। दुनियादारी यानी झूठ बोलना, सच को छुपाना और अवसरों का अतिरिक्त लाभ उठाना। घर में फोन आने पर पिता के इशारे पर वह जवाब देता है, पापा घर में नहीं है, देर से लौटेंगे। पिता खुश होकर पीठ थपथपाते हैं। रेल यात्रा में टीटी को उम्र बताता है, अभी तो मेरी उम्र 10 साल से भी छोटी है, टिकट तो आधा ही लगेगा। माँ इतराती है बात अपनी सहेली को बताती है। खेलते हुए जब वह बैटिंग करने के बाद फील्डिंग की बारी आती है तो पेट दर्द से हो जाता है बेचैन। अंकल स्मार्ट बॉय कहकर उसकी तारीफ करते हैं। बच्चा चतुर होता जा रहा है, धीरे धीरे बच्चा चतुर होता जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें सीखते वह करते वह हो जाएगा एक दिन एक संपूर्ण बड़ा बच्चा। वह हो जाएगा एक संपूर्ण दुनियादार आदमी। हर काम में ढूंढेगा नफा और नुकसान, हर काम में ढूंढेगा नफा और नुकसान। पेड़ की छां
चिड़िया की चहचहाहट और फूल की महक के लिए उसके मन में नहीं रहेगा कोई एहसास। पेड़ की छां, चिड़िया की चहचहाहट और फूल की महक के लिए उसके मन में नहीं रहेगा कोई एहसास, और एक दिन वह आईने के सामने खड़ा होगा और नहीं पहचान पाएगा अपने आप को, और नहीं पहचान पाएगा अपने आप को। ये कविता है पेड़। पेड़ कट रहा था और मेरे पास शब्द नहीं थे लकड़हारे के विरुद्ध। पेड़ कट रहा था पर मेरे पास शब्द नहीं थे लकड़हारे के विरुद्ध। काट रहा था वह तो ठेकेदार के लिए। मैंने कनखियों से मगर गौर से देखा उसे, लगा वह खुद भी कटता जा रहा है साथ साथ, और उसका कटना पेड़ के कटकर गिर जाने के बाद भी जारी था, और उसका कटना पेड़ के कटकर गिर जाने के बाद भी जारी था। सुना सकता हूँ मैं दर्शन साहब? सुना सकता हूँ? छोटी सी कविता, एक कविता और पढ़ जी। पाबंदी। उसने कहा चाहो तो सच बोल सकते हो। उसने कहा चाहो तो सच बोल सकते हो। हमें सुनाई दिया झूठ बोलने पर कोई रोक नहीं। उसने कहा बेईमानों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमने महसूस किया ईमानदारों में भय व्याप्त हो गया है। उसने कहा किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। हमने देखा चारों तरफ लाठियां और नंगी तलवारें लिए लोग घूम रहे हैं। हमने देखा कि चारों तरफ लाठियां और नंगी तलवारें लिए दबंग घूम रहे हैं। हमसे चीख निकल गई, ये सब क्या है? हमसे चीख निकल गई कि ये सब क्या है? उसने कहा जो कुछ है आपके भले के लिए है। उसने कहा कि जो कुछ है आपके भले के लिए है। हमने हाथ जोड़कर कहा ये हमें स्वीकार नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा ये हमें स्वीकार नहीं। उसने कहा आपसे पूछा किसने? उसने कहा आपसे पूछा किसने? धन्यवाद। दर्शन जी, आप इस सत्र को कंक्लूड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आइए ना सर, प्लीज आइए। तो आइए अपने अध्यक्ष का स्वागत करते हैं तालियों से। मित्रों, अभी हरीश जी कह रहे थे अंतम कवि आपको एक संजा तुंदे साईं की शाखर थोई गए पिछली संजा। दो तीन शेर और कहूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। ये फ्री वर्स में छोटे छोटे बंद से कहे गए हैं कि दूध बेचारा निम्मो चाना। दूध उदासी से क्या सोच रहा है, महसूस क्या कर रहा है? दूध बेचारा निम्मो चाना मट्ठे कोला प्रश्न पूछे। मट्ठा दही होता है, दूध जो है वो दही को प्रश्न पूछ रहा है कि दूध बेचारा निम्मो चाना मट्ठे कोला प्रश्न पूछे। काली काफी पिए लेखक, काली काफी पिए लेखक गोरी सोच किया जम दे। कि काफी तो काली पीते हैं पर उनकी सोच जो निकलती है वो बहुत गोरी है। ये कैसे होता है? दूध दूध जो है वो दही से पूछ रहा है कि दूध बेचारा निमोचा ना मट्ठे कोला प्रश्न ए पूछे। काली काफी पिए लेखक गोरी सोच किया जम देने। और एक और देखिए कि अंबर उड़ने दी एक खींच। हसरत थी आकाश में उड़ने की, अंबर उड़ने दी एक खींच। नुक्का पैर लुआई बैठे, पांव और जूते दोनों ही मैंने उतार दिए क्योंकि मेरी हसरत सी आकाश में उड़ने की। और अब देखिए कि क्या कहना चाह रहा है कभी आगे कि मैं फिर से पढ़ूंगा इसको कि अंबर उड़ने दी ई खींच,
नुक्का पैर लुआई बैठे, लेखक बनने दी हसरत ही पढ़ना छड़ना भुली गया। कि लेखक बनने दी हसरत ही पढ़ना छड़ना भुली बैठे। आज के नई पीढ़ी के जो नए युग के नौजवान कवि हैं, उनके साथ यकीनन ये दुर्घटना हो रही है। वो पढ़ना कम चाहते हैं, लिखना ज्यादा चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद साहित्य अकादमी का, धन्यवाद। और जो जयश्री जयश्री सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने मित्र कवियों का भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और भारत की बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता है भाषाई विविधता, जिसका आज हमने यहाँ पर नज़ारा लिया। आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत आभार। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स टू काइंडली विजिट द रिसेप्शन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड यू मे कलेक्ट योर किट फ्रॉम देयर. So we may have a group picture of all these speakers on the stage. Okay. साहित्य अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हम लोग को इस मौका देने के लिए। So I'm going to read my first poem in English translation, translated by Pratibha Saria, and I will go. हमारे सभागार में अगला सत्र 2:30 बजे से शुरू रहेगा, जिसका शीर्षक रहेगा LGBTQ लिटरेचर इन इंडिया, रिफ्लेक्शन ऑन द पास्ट फॉर डेकेड्स। तो आपसे तब मुलाकात होती है।
at Lal Dead Hall. And this session is titled भारत का LGBTQ साहित्य विगत 4 दशकों का प्रतिबिंब, LGBTQ literature of India, reflection on the past 4 decades. I'm Jayashree Sethi. I'm going to be here along with the chair and the speakers of the session. So after lunch, I believe this session is going to give us all some food for thought. So without further ado, I would like to invite the chair of the session, Kalki Subramaniam. Please bring your hands together as she graces the stage and I give introduction. Kalki Subramaniam is a transgender rights activist, writer, visual artist, and poet. She holds 2 master degrees and is the founder of organization for transgender persons called Sahodari Foundation. She is a bilingual poet from the transgender community who has authored brilliant books, We Are Not the Others in English and Kuri Aruthan in Tamil. Some of her essays and poems have been included in many academic curricula in India. Her poetry has been translated in German language. A very warm welcome, ma'am. I would like to call upon the panelists now. I'll begin by giving the introduction of A. Revati. Please put your hands together. A. Revati is a transgender community leader and theater artist with a career spanning more than a decade. She served as the director of Sangama, an organization fighting for the rights of sexual minorities, where she worked on crisis intervention, community mobilization, advocacy, and forging links between the transgender and Dalit and Adivasi women's movement. She has 3 publications to her credit. Her name has been on display at Butler Library, Columbia University with the likes of Maya Angelou and Toni Morrison. A very warm welcome. The next panelist with us is Aditi Angiras. Is Aditi with us? Okay, but is she joining us a little later or she's absent today? Okay. So moving on, we have Kuhu Chanana with us. Kuhu, kindly join us on stage. Kuhu is working as a professor in a college affiliated to the University of Delhi. She has 4 books to her credit. She has also written a number of articles on various facets of feminism and alternative sexuality in Indian literature. She is a recipient of Charles Wallace Trust Fellowship, UGC Research Award Fellowship, and Teen Murthy Fellowship. A very warm welcome. Next, we have with us Nevish. Nevish is here? Oh, great. So Nevish, why don't you join us on stage? Is a climate activist, trainer, holistic counselor, and gender educator. The founder of We Embrace Trust, a non-profit organization that works on human rights, animal rights, and climate justice. Nevish is also part of a campaign called Har Dil Mein Samvidhan. He has conducted gender sessions in different schools and colleges. And today we are very happy that you are with us. Yeah, it's a good time to clap. Yeah, it's a good time to clap, yeah. And now we have Reshma Prasad. Reshma is absent. Then we have Syama Prabhaji with us. She's also absent. And then Vasundhara. Yes. Vasundhara. Oh, Vasudhendra. Vasudhendra, right? Did I pronounce it right? Vasudhendra writes in Kannada and is a counselor providing free counseling services to the gay community. The author of 15 books that have sold over 100,000 copies. Vasudhendra has won many literary awards, including the Karnataka Sahitya Academy Book Prize. His book, Mohana Swami, has been translated into English, Spanish, Marathi, Telugu, Tamil, and Malayalam. He writes a monthly column on gender discrimination in the Deccan Herald newspaper. A very warm welcome. So the session is going to be for 90 minutes, and I hand over the stage to the chair. So over to you.
We have the mics there also. So yeah, no, please. During the session, I'll use the hand mic. A very good afternoon, a very cheerful good afternoon to everyone. Firstly, my thanks for the introduction by you. Thank you so much for that beautiful introduction. For me, as well as for all the panelists, it was wonderful. Thank you. And to all the dear audiences, a very good afternoon. And thank you for your time and coming here. Most of all, and importantly, I'd like to thank the Sahitya Academy for giving us a platform for our voices. Consecutively for the fourth, fifth year, the first voices from the LGBT community was heard from the Sahitya Academy in 2018. And from there on, Sahitya Academy has strongly added more and more and more voices from the LGBTQI community. And particularly, as you all can see, and every day, as you can see, the transgender community is the most poorest and the vulnerable and the discriminated community in the entire spectrum of the LGBTQI community. And we need a stronger support from everyone, including an organization, and importantly, an organization from like Sahitya Academy. So on that note, I'm really happy to be the chairperson of the eminent writers. I would say all of them are wonderful poets, wonderful writers from the LGBTQI community. And I really am humbly, I thank all of you and especially the writers today for going to speak about their reflections, especially of the writing in the past, especially of the 4 decades. Each one will be speaking from their own perspectives. When we talk about the literature, especially the LGBTQI literature in India, it actually dates back to thousands of years, not just recently. It actually dates back to thousands of years, right from Ramayana, Mahabharata, and Kama Sutra. And if you take some of the pages from the Vedas, the gender fluidity is very prevalent, particularly in Padma Purana and in Markandeya Purana. You would see the references and the tales of the Mahabharata. We all know that different tales of sexuality and gender identity, very fascinating tales from Devdutt Patnaik's books. But this was his beautiful interpretations, which has been there for thousands and thousands of years ago. And these references also can be found on gender fluidity, gender sexuality in Kama Sutra as well. And this is not just today, this is not just 4 decades, it's not just a century, it's thousands of years of old. Ours is a country that is not just beautiful and diverse, but has a rich historical and very proud background when it comes to sexuality and gender expressions. That fluidity is what makes it more beautiful. And particularly when it comes to the past 4 decades, that's what today we are going to talk about. One of the earliest works in the past 4 decades has been the autobiographical work of Suryanakant Tripathi Nirala. His book, Kulli Baat, has been one of the first very early publications recently in the past 4 decades. And Kamaleshwar's Ek Sadak Satava Galiyan is a short novel on a bisexual truck driver. That's also one of the earliest works. And we all know that magazines like Bombay Dost also started around 30 years ago, 3 decades ago, and have contributed immensely as a voice for the gay community. And very interestingly, in 1978, Shakuntala Devi, we all know Shakuntala Devi. In 1978, Shakuntala Devi wrote a book, The World of Homosexuals. And it is an acclaimed work. It's an acclaimed work on queer lives. And besides that, when you look back, Manju Kapoor's book was very strong about women's sexual identity. And that was in 2003. And Aruta Patel's 2008 book, Kari,
was also another notable book. In Tamil particularly, there have been several references, and when we talk about the ancient, I come from Tamil Nadu, which is one of the oldest languages like Sanskrit. Tamil is as equally important and one of the oldest languages in India. And in Tamil, we have Tolkapiyam, which is the oldest book in Tamil, written many thousand years ago. There you can see Vallinam, Mellinam, Idayinam, referring to different genders. And also there are many interpretations in old Tamil books, Tamil texts, named as Purananuru, Ahananuru, and many other important works of literature in Tamil literature. But from the transgender voices, the first voice in contemporary literature came from Asha Bharati, one of the oldest activists from Chennai. Asha Bharati wrote about her experiences as a trans woman as a poem. That was the first interpretation of trans life also. After that, it was N. Revati, our beloved Revati, a mother writer who is here. She wrote the first book called Unarvam Uruvamam, which was a compilation of stories of different transgender people's lives. That was the very first book that was published a decade ago, around 12, 13 years ago. And that is the beginning of contemporary Indian transgender literature. Reshma ji is here. Welcome, Reshma ji. She is a beloved poet and a very big activist. I think you will be introducing her. Thank you for coming. And so besides Revatima, we all know that there are lots of trans writers like Lakshmi Narayan Tripathi's Red Lipstick and her autobiographical work, Manabi Bandopathyay's work. I've written an English book called We Are Not the Others, and lots of literature. And Revati Amma's Truth About Me is another important work. So these are not just another book. These are important reflections on lives that needs to be seen, on voices that needs to be heard. On that note, I would like to invite the first speaker, A. Revati, who is a very prominent activist in the country, who is the author of one of the first contemporary literature story compiled book called Unarvam Uruvamam. And she also has written other books, A Life in Trans Activism and The Truth About Me. I would like to invite her on her experiences and her notes on the past 4 decades of LGBTQI literature. सबको नमस्कार। मैं सोची थी अपना मदर टंग में बात करेंगी, मगर इधर आने के बाद टाइम बहुत कम है, इसलिए कितना हिंदी आता है उतना हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ, मगर कुछ गलती रहेगा तो माफ कर देना। मैं रामायण, महाभारत, तोलकापियम, तिरुकुरल उसके अंदर मैं नहीं जा रही हूँ। उसके अंदर जाएगा तो मैं खुद का भाषा में बात करने से वो बात होती है, इसलिए मेरा लाइफ स्टोरी के शॉर्ट से बोलने के लिए कोशिश करती हूँ। 1999 में संगमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑफिस असिस्टेंट कर को ज्वाइन हो रहा था। वो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। वो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में जो किताब है वो किताब पूरा मैं देखा है। कैसी कल्कि ने बताया ऐसा गे लेस्बियन कौन इंग्लिश पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, फॉरेन में रहता है, उनकी किताब बहुत था। लेकिन वर्किंग क्लास पीपल है, हमको इंग्लिश नहीं आता है, मगर अपना कम्युनिटी के बारे में कैसे हम किताब ढूंढना है। उसी टाइम पर मेरे को जो मिला है वाड़ा मल्ली सुसमुद्रम जो लिखा है वो किताब मुझे मिला था। वाड़ा मल्ली तो एक नावल है, मगर नावल का टाइप में जो लिखता है उसका पढ़ को अंडरस्टैंडिंग पूर्ति करने के लिए नहीं हो पाया मुझे, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही नहीं है।
ग्रामर में लिखेगा तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगा। जो मैं अभी कैसी घर में बात करते वैसी बात करने से मुझे अंडरस्टैंडिंग होएगा, है ना। इसलिए मैं सोचा था अपना कम्युनिटी के बारे में किताब नहीं है, 2004 तक नहीं था। इसलिए अपना कम्युनिटी के बारे में किताब लिखने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन किताब कैसे लिखना है। किताब लिखने को तो अच्छा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में जाको एजुकेशन होना चाहिए, और अपना खुद का लाइफ स्टोरी लिखना बोलेगा तो उसको कैसे लिखना है, नावल बोलेगा तो क्या है, लिटरेचर में क्या क्या नाम बोलते हैं वो सब कुछ हमको नहीं मालूम है। और औरत लिखना बोलेगा तो लिमिटेशन रहते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं क्या क्या नहीं लिख सकते हैं, ऐसा राइटिंग फील्ड में लिमिटेशन भी है। हमारा तो सब कुछ लाइफ में लिखो बोलेगा तो हम सेक्स वर्क करता है, हम पीक मांगता है, इसके बारे में लिखेगा तो लोग कैसा सोचेंगे हमारे ऊपर। और ये भी है मेरा माँ बाप वो किताब को पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, ये सब मेरा माइंड में था। जब ये लॉ कॉलेज में एक प्रोफेसर थी कन्नन कर को, वो मेरे को एक किताब दिया था। वो किताब है बामा, जो है तमिलनाडु में दलित राइटर है, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। अभी अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको अवैयार अवार्ड भी अलाउंस किया है उसको। उनके किताब को पढ़ा है, मुझे बहुत कुछ पावर आ गया, लिखना ही चाहिए, मैं किताब लिखनी चाहिए। वो किताब पढ़ने के बाद अपना कम्युनिटी के साथ मैं जा रही थी इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू कैसा लेना है, वो लोग इंटरव्यू देता ना उसको कैसा मैं लिखना है। मगर उनके पास जाको बैठ को ये टेप रिकॉर्ड में ऑन करके उसको सब रिकॉर्ड करेगा तो वो इंटरव्यू देते क्या, मेरे को इतना डाउट था मेरा। लेकिन 14 उम्र से 75 उम्र तक जो ट्रांस विमेन है उनकी सब जाको मैं इंटरव्यू के लिए पूछा था, वो लोग को मना कर रहा था। काय के लिए इंटरव्यू करते हैं अपना स्टोरी को, उसको रखो, तुम क्या करेगा, किताब आने से हमके क्या बेनिफिट मिलेगा, तुमके ये काम कौन दिया है, ऐसा पूरी सवाल उठा रहा था वो लोग को। फिर उसके बाद वो सवाल को मुद्दा दिया था, ये समाज में हमको गलत दृष्टिकोण पर देख रहे हैं, अपना खुद का लाइफ किसकी भी मालूम नहीं पड़ रहा है। आप लोग मालूम है ट्रांसजेंडर लोग मरेगो तो ऐसे उड़ा को लेके चला जाता है, तो सब गलती बात है ना। ऐसा बहुत डिफरेंट डिफरेंट माइंड में था सब, उसके सब हम बदलाना बोलेगा तो हमारा बारे में किताब आना चाहिए। किताब का जरूरी बोलने के बाद ये लोग इंटरव्यू दिया था, मगर इंटरव्यू का टाइप में मैंने रखा था, शेयरिंग का तरह रखती थी। मैं खुद मेरा कहानी उनकी बताती, उनकी कहानी वो बता रहा था। वो ऐसे ही निकाल के आया था 2005 में उनर्वम उर्वम आवर लाइफ आवर स्टोरी करके इंग्लिश में योड़ा फ्रेश ने पब्लिश किया था। जो 100 साल का पहले से तिरुकुरल पढ़ने दो, तोलकापियम पढ़ने दो, सब कुछ पढ़ने दो, उसमें भी आज का दो हम लोग को लिखता है, उसमें वो सब पढ़ो, एक रास्ता होएगा, वो रास्ता है हमारा जेंडर है। अपना जेंडर क्या है बोलने के लिए हमको कितने साल पढ़ा है, किताब में लिखना पड़ा है, हम कौन है। हम ऐसे रहेगा बराबर रहते कि, मगर ये लोग दो देखते वो दृष्टिकोण खराब की, हम जो रहते हैं हम खराब की। ऐसे ही बहुत अपना अंदर अंदर बहुत गुस्सा था, अपना बॉडी के ऊपर गुस्सा था, अपना माइंड के ऊपर गुस्सा था, सब कुछ। इसलिए वो किताब से आज भी हम लोग को अपना जेंडर क्या है बोलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आदि काल से बोलते थे पेड़ी और अदनारी, चिकंडी, वो सब बोलते थे। वो सब हमको काली देरे की टैकी आता था, हमको इंस्टेट करता है, हमको तमाशा उठाता है, ये ऐसा नहीं, फायदा नहीं होना चाहिए, वैसी वेट लगता था मुझे। उसके बाद इजरा कहती थी, किन्नर कह रहे हैं आजकल लिटरेचर में, ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, और मंगलमुखी कह रहे हैं, अरवाणी कह रहे हैं, और स्टेट के बारे में अलग अलग नाम लिटरेचर में आ रहा है। वो सारे नाम भी मैं मांगती भी नहीं है, क्योंकि वो सारे नाम कल्चर का स्ट्रक्चर में आने का नाम है। हम अरवान को मंगलसूत्र डालते हैं इसलिए हमको अरवाणी कहता है। किन्नर की भी एक कल्चर स्टोरी हो सकता है। ऐसे तिरुनंगे की भी तिरु प्लस नंगई मतलब मदिपुकुरिये पेन, ऐसे बोलते हैं तमिल में। ये सब जेंडर का बात नहीं है, मुझे पर्सनली उसको जेंडर नहीं मांगती हूँ। मैं एक रेवती हूँ, बायोलॉजिकली मैं मेन हूँ,
मगर मैं ऑपरेशन करने के बाद औरत लोग कैसे रहते ऐसे ऑपरेशन कर लिया, अभी मैं औरत हूँ, बस इनफ। ऐसे एफटीएम को मैं भी बोलना चाहती हूँ, औरत जो पैदा होता है पुरुष बनते हैं उसको पुरुष ही हम कहते हैं, क्योंकि लोक में दो ही जेंडर है, मैन विमेन है। अब मैन विमेन को ले अंदर ही हम लोग भी है, इसलिए ये नाम तो है, वो नाम पूरा कल्चर स्ट्रक्चर में जो है वो ये नाम है। ऐसे मैं सोचती हूँ पर्सनली। आजकल पुराना जन्म में हमारा तो लुंगी सेट पहनती थी, हम लोग को जिप्पा पहनती थी, रोड में हम जा रही थी, मंडप मंडप में हम रहता था। उसके बाद राजा रानी का लोग आया था, उसके बाद हम लोग रानी का मेकअप करता था और भरतनाट्यम सिखा रहता था और பாதுகாவலருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, सेवियर, हाँ सेवकर हम बनता था। फिर उसके बाद हम कैसे बाहर आया उसे ये समाज कैसे बदलता बदलता जाता है, ऐसे ही हमारा लाइफ भी कपड़े के ऊपर, खाने के ऊपर, हेयर स्टाइल के ऊपर, मेकअप के ऊपर बदला के आ गया। लिटरेचर भी ऐसी है। लिटरेचर 1999 में तो शुरू हो गए मुझे लगता है, उसके पहले दूसरा कम्युनिटी लोग जो गे के बारे में, लेस्बियन के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ट्रांस मैन के बारे में, ट्रांस वुमेन के बारे में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अपना खुद का कम्युनिटी, अपना खुद का लाइफ स्टोरी, खुद का स्टोरी लिखने से उसको बहुत पावरफुल रहती है। वो लिखने के बाद ही हमको मालूम पड़ता है हमारा पेन क्या है, वो सब कुछ हमको मालूम पड़ जाता है। ये लिटरेचर ही आजकल कहां तक पहुंच लिया, ये लिटरेचर से बदलाव आ गया बोलेगा तो इतना बड़ा बदलाव नहीं आ गया, मतलब बदला आ गया। आजकल हम इधर कड़र का आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, बड़ा बदला है। बड़ा बदला क्यों नहीं बोल रहे बोलोगे तो ये लिटरेचरी फील्ड में साहित्य अकादमी जो अभी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा दूसरा लिटरेचरी फेस्टिवल में सब राइटर लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और हमारा किताब छापता है कोई, उसको बराबर हमको एक आथर का जो राइटर है, आथर का जो है वो बराबर इंफॉर्मेशन हमको पब्लिशर से हमको नहीं मिलता है। और ये भी है हमको उसमें से पैसा भी जास्ती नहीं मिलता है हमको। जो ये लोग तो इजरा है ना, लिख दिया बस, लेकिन हम जो सारे लोग लिखता है ये समाज बदलाने के लिए हम लिखता है, पैसा के लिए हम नहीं लिखता है। मगर जो पब्लिश करता है, पब्लिशर का जवाबदारी है, मैं इजरा होने दो, मैं औरत होने दो, कोई भी होने दो, मैं एक आतर का जो हक है, औरत मर्द को कैसी देती है ऐसे हमको भी देना चाहिए, हमारा भी हक है। हम भी मेहनत करके लिखता है। लेकिन मेरा किताब आप कोई भी द ट्रूथ अबाउट मी पढ़ा रहेगा तो आप उसमें देखना, ये इंडिया में जो औरत लोग क्या लिख सकता है, क्या नहीं लिख सकता है, अक्सर रूल्स डालता है, उसको सब में तोड़ा हुआ है। तो एक औरत के ऊपर रेप होती है, वो वजनल में कितना पेन होती है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो घर में जो माँ बाप रहती है, क्यों रेप हो गया, क्यों किताब में लिखना जा रहा है, अवमान हो जाता है, शादी नहीं होता है, वो सब तोड़ा है। मैं वो पूरा खुला ओपन किया है। ये आजकल सब लोग ओपन से लिख रहा है। ये नया लिटरेचर में बोल सकती हूँ, आज अपना खुद हम लिख रहे। தைரியமா எழுதுறோம், என்ன சொல்றது, தைரியமா எழுதுறோம் இன்னைக்கு நாங்க ओपन करेजियस लिख, बहुत करेजियस हिम्मत से हम लिख रहे हैं आजकल, किसके भी हम डरती नहीं है। हाँ मुझे रेप हुआ है, मुझे रेप हुआ है, हाँ लोग बोलते கற்பு बोलको, उसको क्या बोलते, கற்பு कहना सुन रहे हैं, चस्टिटी बोल को औरत को घर में सीला कर को रखता था। लेकिन हम हिम्मत से हम बोल रहे हैं हाँ मुझे रेप किया था, उनको हम शिक्षा करना चाहिए। ये आजकल हमारा लिटरेचर हम बदलाव को लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Revati Ma. That was a very honest, heart-to-heart, open statement, not just statement. It was a
it was all coming from your heart. I understand that. From the transgender community, we don't write to be writers. We don't write to be writers at all. We write because we want to tell our stories. That is what we write, because our stories are never heard. We are a very marginalized, not just marginalized, that will be very stereotyped way of expressing. We are mostly looked upon as an unwanted people, shameful people, and all that. There are different mysterious people, shameful people, unwanted people. What are they doing? They are lazy and all that. All these stereotypes are prevalent in the society. But who will break all that? Who will tell the truth? Will another writer, even the biggest writer in the country, cannot tell our stories. It's we who have to tell our stories. And that when we tell the stories, there is a connection that is happening between human to human. And we tell stories, we write poetry, not to write and become poets or writers. We tell that because there is an entire hundreds and thousands of people like us for whom we are the voices. We are becoming the crusaders. So for trans writers especially, we don't write to become writers. We are storytellers. And that storytelling comes as a novel or a story or through poetry. On that note, I would like to invite Vasudendra, who is one of the prominent LGBTQI writers in the country. And also, Vasudendra will be sharing with us the rich queer, Kannada queer writings, especially Karnataka. I love Karnataka because it's so encouraging to writers, theater personalities, artists, painters. That state is rich in art and culture as well from the south of India. On that note, I would like to invite Vasudendra to take the dais and speak about the LGBTQI reflections in languages, especially from the Kannada perspective. Thank you. Thanks, Kaki. Thanks for that introduction. Actually, good afternoon, everybody. You have to always remember that there are two kind of a childhood we should have seen. One is someone who can read only in their mother tongue, like Kannada or Tamil or Malayalam or Hindi or something like that. Someone who can read English. These two are very different, but because English had always some information regarding the LGBT community side from much older. But as far as regional language, I should not call regional language, so Indian languages are concerned, the information was very, very less in any of the newspapers or media or the literature for that matter. So for that, like when you say that 40 years of LGBT literature means, it's like I can trace back my my journey, because now I'm 55 and I was 15 years old when the first time I started realizing my sexuality. That is something different. See, I don't know what is it called because none of the Kannada books talk about it. Right? So I don't know what is it, being an effeminate person, having a voice which is very much feminine and acts or feels like dancing or singing. I don't know what is it called. At least trans women always is seen in the society. So because people have seen from childhood, so they always been seen. But the gay man will never be seen. Nobody knows what was it and nobody wants to talk about it also. It's much difficult situation actually. So what was happening is in my childhood, because of my effeminate nature, because I speak like a woman, or I act like a woman, or I walk like a woman, like entire like community around people who are around people around me, they started calling me as male prostitute. Gandusule. So that's a word they used to call.
became so, they didn't want to call the entire word, so they used to make it acronym, Gansu, Gansu. That's what they used to call me wherever I go. And it went to such an extent that even my neighbors used to call me, my sister used to call me as, because they also don't have the word, what is to be called for that. Gay itself is not known to anyone. And even one time when I had done so badly in my examination, even my mom called me as male prostitute. So that's a kind of a thing, because she was very angry, not that she didn't love me, so she was so angry, and that's how it happened. So nothing, I have not read anything about a gay man in Kannada newspapers or magazines or the novels. I was a voracious reader. It's not that I didn't read, but I didn't know how to read English. In engineering college, same thing followed. Again, I'm not able to read because I had come from the Kannada background and Kannada medium. I'm good in college studies. I do well in exams, but I'm not a person who is a reader of English books. So then what happened? One newspaper had a question and answer session for the young mans, right? So there used to be something like that in one of the newspaper, and one person has courageously asked, I get attracted to a man. I'm a man, but I get attracted to the men. So what is the solution you will give, sir? He's a doctor. So he's a doctor kind of a thing, maybe an Ayurvedic kind of a doctor. So, the answer was, he said it is sarpadosha, means curse by a serpent curse. So the solution is you go and pray the serpent, then this will be resolved. This problem will be resolved. I got so scared. So some curse is there from the snake for me, for my life. So like someone like a doctor, he claims himself a doctor. Definitely he's not a doctor. So there is a problem for me. Now I had to go to temple every day. I started going to the temple where there is a serpent god, and I used to praying, please forgive me. So make me a normal man. So that's the whole thing, right? You want to get rid of me. So you want him to cure that curse and make you a full man who gets attracted to a woman. And what happened? This particular information in the newspaper, I had made a paper cutting and kept with me, because that's the first time I'm reading anything about me, like in the newspaper. Then later on, it even haunted me even in my dreams, because the dream I started seeing only snakes in my dreams. So they started haunting me in my dreams. It was very tough times during the engineering days also. Absolutely, there was no LGBT community or identification of any club or official support or counseling. No counseling. If there was someone had counseled me, what am I facing and what's going on, I think I would have led a much better life than what I am today. What all the tough path which I took. So I have gone to a very tough path to realize anything about me, learning about myself, which would have become much easier. Later on, I became a writer. I started writing. So I wrote almost like 12 books before I came to my Mohanaswamy. It's a gay literature. So Mohanaswamy, most of you might have heard, because it's come in the English also. But what kind of books were there in Kannada? If I go through, without mentioning the name of the author, they're all very famous authors, and I have a lot of respect for them. See, they are also not knowledgeable about this life. They don't know what a gay life is. They might have seen or they might have heard, but they don't know exactly what it is. One of the author, he goes to a conclusion that he wants to narrate a gay man where a man cannot have intercourse with a woman, and finally he commits suicide. And the conclusion is, a man, if he cannot have an intercourse with a woman, the only solution is he has to die. That's the conclusion. It's a very famous author. I'm not joking. So all Central Sahitya Academy Award and all would have been there, because I'm not blaming them, but they were innocent. They didn't know. The other idea was, many of the authors had a concept that you will go to a man because you are not getting a woman. That's another concept. In many authors, including Jnanapita Award authors, the concept is, because you don't have girls, that's why you are going for a man. Once you get a woman, you will be cured. You will be automatically cured.
Well, that's also not true. So absolutely not true. So that kind of thing. And there's one more author who's in autobiography has written an interesting one, actually. He says there was a journalist who was well known as a gay man, like they were able to recognize that he disturbs you when you are along with him in a solemnly in a room or something like that. But in one of the literature festival, both of them were put in the same room. Okay, so then this man got so scared. In the night, this guy is going to come and disturb me. So he was very sure of that, because that person is already, everyone tells him he's a gay. Everyone has got a gossiping that he's a gay. They have experienced and all those things. Now what he says is, entire night I decided not to sleep. Okay, he's not in his autobiography. He says, the entire night I decided not to sleep. And he doesn't sleep the whole night. And he says, the other person slept peacefully. The one who was supposed to be gay, he slept peacefully. And I am the one here who woke up the entire night thinking that he is a gay and he will come and disturb me in the night, So then he says, I think there is some problem with me, not with him. He concludes with that. That was very positive note for me, actually. I found it very interesting. And then when I started decided, like, no, I have to write about myself. It was very difficult challenge for me, because already I'm an established author. So my books were sold quite well by then. And now you are taking a risk of saying or exposing your sexuality, which might harm your readership or whatever you have, because as I said, like, my books sell in thousands, like 25,000, 10,000, so there's 15,000, 20,000, like that. It's very common. Most of the books are sold more than 10,000 copies, all the 15 books. So that kind of a readership I had. And it was very scary for me, like, what's going to happen. But I said, finally, for an author, courage is very important. At the end of the whatever the kind of author you are a historian, or you are a journalist, I'm a short story writer, or you're a poet. At the end of the day, we are all trying to tell the truth. What is truth for you is left to you. You decide what is the truth for you. But end of the day, we are going to tell the truth. Unless I tell about my sexuality, it's not going to work. So I'm not going to be a true author. Then I wrote all the stories, of course, fictional stories based on my own personal experiences. So you can call it as 80-20. So 80% of the personal experience and 20% will be the fiction. Otherwise, it becomes autobiographical. So it won't be good. So I wrote the fiction. But the problem I faced is you don't have the vocabulary. What is to be called? There are so many things. Now I'm already familiar with it. So lesbian is different. Gay man is different. Within the gay man, top is different. Bottom is different. Fluidity, sexual fluidity. What do we call all of them? No idea. I just started coining my own words, whatever it might be. So let me coin whatever the words which is there. At least let me introduce. That's how I went, and I wrote the book. And interestingly, when the book came, people got shocked. I also released that book around 2013, somewhere in 2013, December, I released the book, actually, about the gay literature, around 11 years before. It was quite ahead of time. No one was so serious about the gay literature. Trans was coming up, actually. Trans literature was already coming, but the gay side, it was less in Indian languages. English, yes, it was there already. So what happened? No one wanted to talk about that book at all. Everyone got scared. No magazine wanted to speak about that book. No magazine, newspaper wanted to carry any criticism on the book. Nothing. So I have to live with it. I said, it's fine. But what happened is, there was something change which happened. It came in English. Once it came in English, all the English newspapers started praising the book. That's a good book. Someone has written such kind of a thing, that too in Indian languages, which is unheard of kind of a thing. So they started appreciating the book. Then Kannada media took over. So they said, now there's no problem. They started freely talking about the gay literature, gay this thing. So they came out of the shell. Now, what is there in our this thing is very interesting thing. There are many people who are writing
their own experiences. We have got the trans woman story, the autobiography. Akaya wrote her autobiography recently. And we have trans man autobiography, very rare. See, we always have a man getting converted into woman. It's very, so many are there, but a woman getting converted into a trans man is very rare. We don't have such story. There is one in Canada, and many of the heterosexual people also started writing about their own ideas about their friends, their this thing, and all. They started doing that. But this has been there in Canada. Now, a lot of books are coming. I'm very proud of that. Okay. And lastly, like, why should we have to write? Is the question, right? Why we are writing? So they said, indirectly, they said that want to tell our stories. What exactly is spread the knowledge? When you have the knowledge, the phobia will come down. The people have the phobia because they don't have the knowledge. I'll just give an example of based on my book. To a mother and her son, both of them were my good readers. They're great fans of me. So they used to read everything about whatever I have written. And they wrote, and this boy was not married even when he had become 30 years also. And one day, his mother called me and said, Vasu, thank God my son is not Mohanaswamy. So that means like his son was Mohanaswamy is the name of my book, which is about the gay stories, right? So she has got a term to call a gay man as Mohanaswamy. So she said, Vasu, my son is not Mohanaswamy. I spoke to him and he said, no, ma, I'm going to get married within 1 year. Don't worry like that. I'm not Mohanaswamy. So that gave me a lot of confidence, because in a family, which is a traditional family, a mother asking her son, are you a gay? Is a revolution, according to me. So I felt, though she's saying that my son is not Mohanaswamy, I'm happy. I was also happy because someone is using a terminology and someone is calling, asking her son, are you a gay? Which is superb, I thought. I think more such books will bring a change in the society. And when we will stop talking about our LGBT as in exclusively, as I told, when a mom, when she comes to know that her son is a gay, and she brings all beautiful male photographs, boys photographs, and shows to her son and asks her, whom do you want to marry? Like a mother does now with her daughter. She brings all beautiful boys photographs and says, whom do you want to marry, right? If the same thing happens to a gay son, then I don't think we need to talk about our sexuality so much, but Delhi both do, right? Thank you very much. Thank you so much, Vasudhendra, for that in-depth personal account and also sharing about your literature. One thing I would like to emphasize is that during Vasudhendra's notes, you said that trans women are visible and gay men are not visible. I think that is because ours is a gender expression, gender identity, and yours is a sexual orientation. And also, as I said earlier, within the entire transgender spectrum, transgender women are the most poorest marginalized, because we cannot hide our gender expression. We cannot hide our gender expressions. And because of that, our own family disowns us. So we don't have a choice. We don't have a choice to hide our gender expression. So that has been the reason why only transgender women, thousands and thousands of transgender women, are remaining as beggars and sex workers in this country. But it is changing, and the political changes, the political legal rights, the social acceptance is growing rapidly, and not just transgender people. Because of the Section 377, which was decriminalized in 2018, transgender, not just transgender people's love, but also gay men's love, lesbian people's love, bisexual, everybody's love, the entire human species love is accepted in India, which I think is very laudable. One of the very groundbreaking and historical verdict by the Supreme Court of India in 2018
was the decriminalization of Section 377. So on that note, I would like to invite Kuhu Chanana. She's going to talk about one of the rarest narratives, the lesbian motherhood. When we talk about the love stories of between two women, we don't hear it much, except from a movie or some movies like in Fire or something like that. Certain films, and mostly it's all the commercial films are all lewd, and it's all pornographic and all that. But every love is same. Every love is fragile. Every love is tender, and even more fragile, even more beautiful, and even more tender is the motherhood of lesbian. And we cannot wait to hear from you, Kuhu. Very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank the organizers of this literary festival for giving me this wonderful opportunity to present my paper on lesbian reclamation of domestic spaces in contemporary lesbian writings. That lesbian spatial reclamation has been hugely invisible, especially in India, is a well-known fact. The two brilliant lesbian anthologies, that is Facing the Mirror by Ashwini Shubhankar, published in 1999, and Loving Women by Maya Sharma, published in 2006, catalog it emphatically. In fact, in Facing the Mirror, almost all the contributors have written under pseudonyms. However, the recent queer anthologies like Close to Close, published in 2012, and Out Again, published in 2012, have come quite far from that position of anonymity, but unabashed overt visibility of lesbians is still a tantalizing dream in the Indian context. But from the invisibilization and representation of lesbian characters that are fraught with lesbophobic anxieties, such as Rajkumar Chaudhary's Machli Mari Hui, Keval Sood's Murgi Khana, Shivani's Manik, Shobhade's Girlfriend, to name the few, the lesbian writings in India have come a long way, where the pejorative depiction of lesbian characters has been replaced by affirmative and fruitful demonstration of lesbian relationship. And the story that I will be discussing today bear witness to it, and that is Stardust by Karishma Kripalani. Considering the fact that there is an immense lack of mobility and financial independence for women in general as compared to men, it does not come to me as a surprise during the course of investigation of lesbian reclamation of spaces that the lesbian appropriation of public spaces as reflected in the literary text is negligible as compared to domestic spaces or homosocial spaces. Little wonder, unlike a gay plein air, as represented by Raj Rao in 6 Inches, published in 1999, and The Boyfriend, published in 2003, it is almost impossible to find a lesbian plein air. In fact, let alone lesbian plein air, according to Shilpa Phadke, as documented in Violator, published in 2011, there is a serious dearth of even straight women wanderers in India. Little wonder the consumption of public spaces by lesbians is almost absent in literary representations. Since in the Indian context, home are by and large heterosexualized, thus by using the politics of inversion, the forging of homoerotic desire right in the bedroom of heterosexual homes is indeed a radical act. Also, since family and homes are the spaces where the maximum violence against lesbian occurs, in order to silence them, therefore, the reclamation of home through deviant desires is indeed an act of lesbian rebellion. The research conducted by Ferdinand and Gomuthi that focuses on the violence faced by lesbians in India and home as a major site of oppression of lesbians is especially significant in this respect. Gay men have been documented as more visible than lesbians within the urban landscapes, with the streets, bars, parks, and events characterized as male space, particularly at night. The increasing cost of entry into the venues and expansive drink prices tied together with gay male spatial dominations may act as barriers for lesbians wishing to enter and consume commercial lesbian and gay spaces, reflecting the complex interplay of gender and money when claiming a spatial visibility.
Thus, the normalization of the same-sex desire by locating it within the familiar heterosexual spaces is a potent tool of inversion in terms of homosexualization of spaces, and subsequently it endorsed the acceptance hope of homosexuality. The sexual rendezvous between Astha and Piplika in the bathroom in Manju Kapoor's A Married Woman, and between Chacho and Lalna, the two lesbian lovers in Gitanjali Shri's Tirohit, in Chacho's bedroom, in which she sleeps with her husband, bears witness to it. When viewed through the lens of queer geography, these texts, through reincarnating sexual identities of these women within homosocial domains, help in adding entirely new dimension to the sphere of spatial studies. The familiarization through domestic re-territorialization takes a distinct turn as the story Stardust by Karishma Kripalani depicts not only alternative family structure, but also lesbian motherhood. The story centers around the lesbian longing of two women who are kind of co-wives of a man who died in a freaky accident. In this story, there is an allusion to the birth of Bhagirathi by the two queens of King Dilipa. In the Bengali version of Ramayana, that is Kriti Vasa Ramayana, there is a story of the birth of Bhagirathi, which etymologically stands for born out of two bhagas or two valvas, out of union of two queens of King Dilipa after the death of the king. Apropos of this, Geeti Thadani in her seminal work Sakhyani contends, to quote, "This is found in the manuscript from Kriti Vasa Ramayana. In this version, the two queens, Chandra, that is moon, and Mala, that is from Mal, unite. Mal is a feminine fluid, which is often the cause of parthenogenesis. The name Bhagirathi emerges when the Bhagas are the mothers," unquote. In the story Stardust, the two women in the life of Dilip are also named Mala and Chandra. One of them is a homemaker, while the other is a heroine. After the death of Dilip, the two women met accidentally at a secluded resort and the sparks flew. In fact, the story begins with an allusion to Kriti Vasa Ramayana. The author quotes the following lines at the very outset of the story. To quote, "Bahe bhage shambhoge je tatha upagatha brahmadeva thulin nam bhagirathi," unquote, which means, born out of mutual enjoyment between two vulvas, he was named Bhagirathi by God Brahma, unquote. The resort at Lonavala, where both Mala and Chandra have slept with Dilip and thus signifies heterosexual spatial dynamics, gets reinvested with lesbian energies when the two women in Dilip's life, co-wives, make love in the same resort after his death. In fact, Mala asked Chandra categorically that has she ever come with Dilip to this particular resort, to which she answers in affirmative. Also, the all-pervasive nature of lesbian desire is visible from the fact that throughout the story, there is a presence of Shiva and Vishnu who blessed the two women in the hope that they could ensure the continuation of dynasty by giving birth to modern-day Bhagirathi again. The presence of lesbian desire across time and space is conspicuous in the statement of Shiva when he affirmed in the story that, to quote, "All this has happened before, all this will happen again," unquote. The same resort that has been surcharged with heterosexual energies is re-territorialized by lesbian lovemaking, and there is an explicit depiction of homoerotic passion that exists between the two women. Throughout the story, there are loaded imageries of water, blossoming of flowers, and mirror. To quote from the story, "She reached back into the mirror of Chandra's body for more. The surface of the mirror rippled with a sigh. Under their indoor canopy, they swam into each other. In the room, the vase of lotus flowers exploded into the bloom, revealing to the world their secret geometry," unquote. Also, the mirror trope that postulates Foucauldian idea of heterotopia can be seen in many lesbian texts, as in Manju Kapoor's A Married Woman. In this novel, there has been a detailed depiction of how both Piplika and Astha see themselves together in the mirror, and consequently, there is a sudden spurt of lesbian longing between them. No wonder Suktankar's seminal work on lesbian writing is entitled as Facing the Mirror. The micro-surreal spaces of desire enveloped through water act as catalysts to subvert the heterosexual speciality at the resort. The lacuna that exists between real and imagined has been beautifully exploited by the author.
The reconstitution of reality through reflection is quite evident in the following depiction of mirror as heterotopia, as Foucault has taught. To quote Foucault, the mirror functions as a heterotopia in this respect. It makes this place that I occupy at the moment when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all the spaces that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived, it has to pass through this virtual point which is over there, unquote. This mirroring or replication of reality of the lesbian love gets further translated in the form of alternative family structure that the two women form later with a son. The story ends with the depiction of Chandra's Pali Hill apartment, where the two women live as partners with a son born out of lesbian mating, just like the birth of Bhagirathi in Kriti Vasa Ramayana. In fact, the name of their son is also Bhagirathi. To quote from the text, to quote, in the kitchen of Chandra's Pali Hill apartment, Mala nursed Bhagirathi as Chandra prepared lunch. Looking down at her new son's perfect form, Mala sighed in contentment. Shiva is watching over him, he told me, unquote. Thus, this story is also able to defamiliarize the meaning of family within a previously well-defined heterosexual household, and consequently, it generates a structure within which one can imagine an outlaw family, to quote Cheshire Colquhoun's term. However, the domestic and homosocial spaces have been appropriated by lesbians in such a way that the re-territorialization of these spaces through camouflage and secrecy does not appear a regressive stance, but rather it comes across as a strategy to combat overt violence. The flourishing of homoerotic desire by these disenfranchised citizens inside the heteronormative homes is no less radical than the possession of public spaces by gays, although it by no means justifies the obvious marginalization of lesbians at these spheres. But one must also keep in mind the dynamic potential of domestic spaces that transcends the boundaries of other spaces in both real and imagined spaces. Apropos of this, it is pertinent to quote Lefebvre, who discusses the qualities that the house begins to acquire in the urban dwelling in the 20th century. He writes that in Bachelard's The Poetics of Space, the objects of a house have an ontological dignity. To quote, from cellar to attic, from foundation to roof, it has density at once dreamy and rational, earthy and celestial. The relationship between house and ego, meanwhile, borders and identity, the shell, a secret, and directly experienced spaces, for Bachelard epitomizes the virtue of human space, unquote. Thus, in the end, I would like to conclude that these texts, by presenting unique, specific Indian liminal spaces like roof, bedroom, angan, of an apparent heterosexual household, which are very different from the Western idea of domestic spaces, and micro spaces like kitchen, sink, and mirror, present an alternative cartography for the disenfranchised sexual citizens by making sure that a distinct kind of territorial reclamation takes place. Similarly, moving away from the Eurocentric notion of spatial consumption, it's a very Indian take that the spatial appropriation in these texts, I contend, also interrogates the received notion of queer empowerment by shifting the emphasis from visibility and inclusion and in your face kind of visibility to alternative agential modes such as secrecy and camouflage. Thank you. Thank you so much, Kuhu, for that very detailed, very informative, and very beautiful narrative of the tender love of between women through your in-depth research. It's more of a research and information that you shared with us. Very in-depth and very astonishing, I must say. And one thing about chairing this session is that we have a spectrum of identities on the dais. We have trans people, we have gay people, lesbians, and also, gender fluidity and all that. So on that note, I would like to invite Nevish, who is a young queer poet. I invite Day to speak here
on their perspective on literature. Thank you. चुड़ैलें प्रतिवाद करती हैं, सवाल उठाती हैं, असहमति प्रकट करती हैं, पलटवार करती हैं। चुड़ैलें दिन के उजाले में दुनिया की तमाम औरतों से घुली मिली रहती हैं, उस पर अपनी आदत के अनुसार पहचान ली जाती हैं। So thank you everyone for everyone who has organized and invited me. Uh, every literature I see as a queer literature if it is beyond binary. So for me, seeing things beyond binary is queer literature for me, starting as everyone mentioned on the dais, starting from our religious, cultural aspect and coming to the after independence and things are coming like chocolate before independence and after. I'm from Gorakhpur, so I must talk about Firaq Gorakhpuri. So Firaq Gorakhpuri's poetry came and the queer notions, and you must know when he talked about this in his ghazals and couplets also. So I'd like to recite some lines before initiating. Were there 23 pairs of chromosomes or not which created my zygote? Am I mutant? Maybe. I'm different because I love, and you all are same because you hate, and I'm different because I just love. So ancient text acknowledges, yeah, as mentioned, Shikhandi, and we're talking about transgenders and gay love, but I'm here to talk about asexuality, asexual love. So in India, the literature, if you talk about in last 4 decades, there is no literature from in India which is talking about asexuality. There is only one book I found, that is Marriage of Convenience by Meghna Mehra, who talks about asexuality and love of asexual people and how they are going to make it on. So apart from that, I also find poetry is the key in the queer literature, which is very intimate way to convey how we see things. Apart from that, in when we talk about uh, regional languages, so Nautanki, Mardana Nach, and the words like meetha, halwa, and jalebi used in the literature of Hindi literature to represent community, specifically queer people. So on that, whenever I write, so मेरी poetry may find Urdu more prominent. So and also seeing from the intersectionality, that how space for a non-binary person and then asexual person coming together, and especially talking about aromantic asexual people here, so that bringing all together under one, and it coming to be very solitude and solitary poetry, which is I'm going to recite, which talks about seclusion and seeing oneself outside from the community, because the oppression and the discrimination we face, that is we are marginalized within the marginalization. So one poetry I would like to dedicate to the asexual people. खैर अब तो मेरा एतराफ़ इश्क भी अब मेरे गुनाहों में शामिल है। फ़कत मसला अब ये है कि अपनी यादों, उसकी बातों, मुलाकातों को मक्तल रवाना करें। जब जुदाई ही है मुकद्दर इस सफ़र में, तो कुछ दूर साथ चलना। आपकी तलाश में शराबों से मिलना, तो बेहतर है अपनी मसरूफ़तें जल्द ख़त्म करें। अपनी तिश्नगी को ज़हराब से ही तरब करें और कब्र में अपने महशर का इंतज़ार करें। So whenever I'm talking about queerness and the non-binary aspect, we always see that queerness is very, very visible in the Indian literature or the religious texts. But talking about something which is marginal is specific, and then bringing that is another part. So when I started writing about my feelings, which is like asexuality, and that is my orientation. So people do not acknowledges, they think ऐसा क्यों लिख रहे हैं जब इसमें आप uh, uh,
आप बता नहीं पा रहे हैं कि प्यार कैसा है या फिर अलग कैसे है. Then I also started expanded and starting writing about different aspects of the literature like Yudh, and then coming to the that what is happening in the society, social issues. But anyhow, the point is what we are seeing in the literature is, uh, are we seeing literature as magazines? Are we seeing the Insta post as a literature? Now the Gen Zs are coming with the different gender identities, and are we going to acknowledge that what is coming on the social media platforms, apart from the writing in the books and all? So understanding all these intersectionality is a bit challenging, but um, lasting my point on how we're going to acknowledge and giving them space by one poetry again. uh, किसी की बातें तल्ख सी, किसी की खामोशियां कहर हैं, बता ले चश्म कर ले कोई, समझो खुदा की मेहर है. थैंक यू. Thank you so much, Nevish. I think this is one of the fewest platforms and fewest dais in the entire LGBTQI meetings or seminars or symposiums or literary events that asexual people's voices are heard. And that too, the poetry is very, very beautiful. Thank you for sharing your feelings through poetry as well. Thank you for that. And our speaker, the last speaker, but not the least, of course, is Reshma Prasad. And would you be introducing her, please? And after the introduction, I invite her to speak. चूंकि इस समय रेशमा जी उपस्थित नहीं थी तो हम उनका परिचय नहीं दे पाए. सो रेशमा प्रसाद is a noted poet, writer and conversant in Hindi, English and Bhojpuri. She is the expert member, National Council for Transgender Persons, Government of India, and she is also the founder of community-based organization named Dostana Safar. We warmly welcome you here to the podium and we would like to hear from you. थैंक यू. जिंदाबाद साथियों. और मैं अभी एक्सपर्ट मेंबर नहीं हूँ, और जो नेशनल काउंसिल शुरू में बना था उसमें मैं ये जगह को गुजर चुकी. अभी हमारी साथी यहाँ पे मौजूद है, कल की सुब्रमण्यम, जो उसको सुशोभित कर रही है. और मैं अभी एडवाइज़र हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट मेंबर हूँ, और अलग अलग तरीके के काम करने का प्रयास कर रही हूँ. एक रेस्टोरेंट भी संचालित करती हूँ कम्युनिटी का, और ज़्यादातर कविताएं लिखने का प्रयास करती हूँ. लेकिन जैसे हम करती हैं शिकायतें, मतलब कभी अपनों से, कभी इस मंच से, इस मंच के ऑर्गेनाइजर से, सबसे बड़ी बात है कि जब हम जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हो, मतलब एक मंच पे ही गुजर रहे हो, तो सोचो कि क्या स्थिति है. और ये आज से नहीं है, मतलब ये बहुत ही लंबा ये है, हजारों वर्षों का ये स्थिति है. मैं रेवती अक्का को सलाम करती हूँ. उन्होंने एक नए तरीके से धारा को उसको दीवाल बनाने का शुरू किया. कल्कि जी ने उसे और थोड़ा ऊंचा किया, और हम लोग उस पर चढ़ के झांक रही हैं कि हमारा वजूद किधर है. और संजना है, और शांता जी हैं, नहीं नहीं, शांता खो रही, शांता है, देविका है, चांदनी जी है. मेरे लिए बिस्तर को बाजार में ले आना कोई जरूरी नहीं समझ में आता है. वो समझ में आता है कि उर्दू की कविताओं में प्यार को सिर्फ इस तरीके से समझा गया, इसलिए बिस्तर को बाजार में ले आने के लिए प्रयास निरंतर होते रहे, और जो हमारी जिंदगी के साथ में जोड़ करके
मंचों पर भी स्थापित करने का प्रयास किया गया और किया जा रहा है। दैट इज कि इस प्रैक्टिस को मैं बराबर विरोध करती हूँ कि बिस्तर जो बाजार में ले जाने वाले हैं उन्हें ले जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरा बिस्तर मेरी जिंदगी और मेरी पहचान के साथ में, जैसे हमारे कल की साथी ने कहा कि हम चाहे या ना चाहें, हम मतलब अब चाहे बद कहो चाहे बदनाम, हम सामने आएंगे ही और हम अपने वजूद को स्थापित करेंगे ही। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोगों ने जहां जहां खड़े हुए वहां से आंदोलन भी उसी तरीके से ही हुआ। नहीं तो प्रयास तो आ, लोग कहते हैं ये 30 और 40 साल का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हजारों वर्षों का ये है, जिसमें आप देखें तो कामशास्त्र को देखें, कामसूत्रा को देखें, उसके 15वें अध्याय को देखें, तो हमने कभी अपने कल्चरल वैल्यूज को नहीं ये किया, कल्चरल वैल्यूज को नहीं ये किया। और ये क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए हमने एक किताब लिखी है, अभी कुछ दिन में आ जाएगी आपके हाथों तक भी। नाम है भारतीय वांग्मय एवं कालक्रम, किन्नर दर्शन नाम से है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम अपने पहचान के संघर्ष को, जो लोग क्राइसिस और इस तरीके से मतलब कभी कहते हैं कि अ, पुरुष शरीर से परिवर्तित, जबकि हमें सिखाया कल की जी ने कि जेंडर ऑफ फॉर्म। तो इस शब्दों को किस तरीके से देखते हैं, मतलब हिंदी, खास करके हिंदी, तो हिंदी क्या देखती है, किन्नर, किन्नर समाज, ऐसे शब्द आते हैं। हमारा समाज से क्या अलग रिश्ता है, अलग पहचान है। साहित्यकार, व्यंगकार, व्याख्याकार, बोलने वाले सब बोल रहे हैं कि आपका किन्नर समाज। मेरा समाज क्या अलग है? तो इन 40 सालों की बात ना करूं, ये हजारों सालों की बात करूं, इसमें कौन जिम्मेदार है कि पाणिनि के व्याकरण में पुरुष, महिला और उभयलिंगी और मल्टीपल जेंडर्स की बात हो रही है, उनके सर्वनाम पहचान की बात हो रही है, लेकिन जब हिंदी पढ़ी जा रही है तो सिर्फ पुरुष और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो पुरुष और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, और कुछ ज्यादा अगर होता है तो न्यूटर जेंडर पढ़ देते हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं ऐसा गलत, तो हमें तो आगे भी वैसी तरीके से मिलेगा। मैं आपसे प्रभावित होकर के मैं प्रशिक्षण देने जाती हूँ, वहां पे हमने पूछा लिंग की परिभाषा क्या है, सब वही बोल रहे हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि परिभाषाओं, शब्दों, लैंगिकता, यौनिकता, ये किस तरीके से समझ में आएगी, वो कैसे हमारा वोकैबुलरी में और रेफरेंसेस में आएंगे, वो रेफरेंसेस की क्या स्थितियां हैं। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है, शोध का विषय है, और शोध के क्रम में हमें संस्कृतियों के हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट को देखना ही होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, जो हम अंग्रेजी में स्वीकार करते हैं, और सरकार ने हमें उभयलिंगी शब्द का दिया, और किन्नर को लेकर के लोगों के इतने मति भ्रम है, जबकि किन्नर शब्द का नाम है किंतु नर और किन धर नरा, लेकिन उससे एक ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सिस्टम से जोड़ करके उस आइडेंटिटी को ही लैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, या उसे बहुत अलग तरीके से ये किया। तो उस उन स्थितियों को कैसे वापस लाएंगे, उसे लिखना और ये करना। हाँ, रेवती अक्का ने कहा कि हम जो शब्द हैं उनसे बहुत ये नहीं है, लेकिन मैं शब्दों से बहुत ये करती हूँ। हमारी शांता बहन है, उनसे हमारे इन शब्दों पे बहुत विमर्श या बहस या कुछ भी कही जा सकती है, लेकिन हमारी बहन है, हम लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये वजूद का प्रश्न है, और ये वजूद हमारा साहित्य में क्या है,
खास करके हिंदी साहित्य में क्या है कि ऐसे ऐसे किताबों को पुरस्कृत कर दिए जाते हैं जिनमें शब्दों को पढ़ के हमारा ऊपर से नीचे तक जल जाता कि हमारे बारे में क्या लिख रहे हो, पढ़ते हो, लिखते हैं मेरा, और उसको पिक्चर भी बना देते हैं ऐसा। तो सोचो कि या तो हम अपने कल्चरल वैल्यूज को नहीं चाहते हैं कि वो अपने तरीके से यहाँ पे दिखते रहे। आप कल्चरल वैल्यूज पे बात करें तो पूरे विश्व में संस्कृतियों का संघर्ष है। मतलब एक धार्मिक आधार पर जो पहचान है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि आई सपोर्ट द कुर्दिश मूवमेंट, लेकिन वहां पे कौन से रिलीजन के लोग हैं? तो इसलिए आवश्यक है कि अपने सांस्कृतिक वैल्यूज को किस तरीके से हम फिल्ट्रेटेड नहीं कह सकती हैं कि उसको किस तरीके से फिल्ट्रेट, लेकिन उसको भाषाई तौर पे क्या सम्मान मिलना चाहिए उसको लेकर के सबसे ज्यादा ये है। क्योंकि किन्नर व्यक्तियों के समुदाय में जो बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव हमारे देश में रहा है, हर एक जगहों पे, चाहे महिला पुरुष या कोई भी व्यक्ति हो, उनके और हमारे संस्कृतियां तो एक ही है, उसमें अलग अलग तरीके से पालना है कि जैसे अपब्रिंगिंग वन स्टाइल, कि हम अपने घर से आते हैं और एक जगह पे जाते हैं और फिर हमसे लोग डरने लगते हैं, फिर हम मांगना शुरू कर देते हैं। ये कैसा आया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया? और जब अभी हम हैं तो हम उसको लेकर के रो रहे हैं, लेकिन हम अपनी पहचान को लेकर के कितना स्थापित कर रहे हैं। तो हम मुख्य धारा, जो तथाकथित मुख्य धारा है, उसको लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे कल्चरल वैल्यूज को वो जगह दे पा रहे हैं या नहीं? तो जो हजारों वर्षों से हमारा ये रहा, बैले बोले कि अर्धनारी अर्धपुरुष या अर्धनारीश्वर, बहुत लोगों के इस पे ये होंगे, लेकिन ये एक चुनना है। मतलब हिंदी साहित्य में या हमारे धार्मिक साहित्य में एक पहचान है जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि ये आधा लिंग का शरीर कैसे है, आधा लिंग का व्यक्ति कैसे है, कभी किसी को क्वेश्चनेबल नहीं रहा। लेकिन हम अभी के समय में हम प्रश्नगत है कि चाहे वो कम्युनिटी के लोग हो या कम्युनिटी से बाहर के लोग हो, वो सभी उन प्रश्नों को ये करते हैं। तो ये जो 4 दशकों का स्थिति रहा है, वो ऑटोबायोग्राफी, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोगों की आवाजें आ रही हैं, लिखनी चाहिए, पहच बननी चाहिए। लेकिन जो आवाजें आ रही हैं वो क्या आ रही है, वो किस तरीके से अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव में प्रभावित होकर के आ रही है? कि मैं अगर लाइवलीहुड पे काम कर रही हूँ, मतलब कि जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे जो लाइवलीहुड है, मतलब उत्तर भारत के क्षेत्र में या दक्षिण भारत के क्षेत्र में या पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में, वो अलग अलग तरीके से है और अलग अलग तरीके से हम उसको किताबों के स्वरूप में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हम लेकर के क्या जा रहे हैं कि किन्नर की ताली, अ, क्या मैं अगर ताली नहीं बजाया तो मेरा वजूद पहचान नहीं है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल, साहित्यकार मुझसे मिलते और बोलते, आई वॉन्ट टू राइट ऑन यू। अम्मा, कैसे आप व्यक्ति हो, हमारे ऊपर लिखना चाहते हो? हमारी जैसी जिंदगी जी के तो देखो। माँ बाप के उसी पेट से निकल के आए और हम त्याज्य हो गए, हम अछूत हो गए। तो कैसे ऐसा होगा कि आप उस तरीके से इन सब चीजों पे हमारे प्रति जो सीरियसनेस है साहित्य के विधा में, वो कैसे लेकर के आ पाओगे? तो फर्स्ट आई थिंक कि हम जो जैसे अगर हम महिला साथियों पर कुछ
उनके साथ के व्यवहार, व्यतीत व्यवहार में लिखना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं उनका प्यार, उनका शोषण, उनका हिंसा, उनका यौनिकता, उनकी लैंगिकता को कोई यही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, बट ऑन द बेस्ड कि वो किस तरीके से हमारे लिए लिखे जाएंगे, हमारी प्रेम, हमारी यौनिकता। अभी हमारा एक साथी ने बोला कि ट्रांसमैन साथियों का बहुत सारा ऑटोबायोग्राफी या कुछ ऐसा नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया? वो क्या दुनिया में बता पाएगा कि पर्सन कमिंग आउट एज ए मैन एंड मैन हैव नॉट द पीनस? वो दुनिया बताएगा तो उसी दिन उसके ऊपर एक तीर खींच के चलेगा कि वो कब उसका रेप हो जाएगा किताब लिखने के बाद, वो कोई नहीं जानता। तो सोचो कि वो जिंदगी किस तरीके से जी रहा है। तो हम तो कभी बिस्तर को पहचान के लिए व्यग्र है, लेकिन हम खुद अपने पहचान के लिए व्यग्र है कि उसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं। आप संवेदना के भाव में ले रहे हैं या जैसे इम्पैथिकल वे जिसको कहते हैं उसके तरीके से ले रहे हैं। तो हमारा अक्का ने बोला कि जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से ले रही है, लिखने वाले या मतलब छापने वाले। तो मैं एक पब्लिशर के पास में गई, वो बोला कि फर्स्ट टाइम हम कोई ट्रांस वॉइस को हम अपने प्रकाशन में दे रहे हैं। सोचो कि वो 100 साल का हिस्ट्री मनाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि वी हैव नॉट द वॉइसेस, कि उनके तरफ से कोई ये है। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने के इसको पश्चिम से अवधारणा प्रभावित होते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक शब्द है, उसी शब्द में सभी समाहित करने का प्रयास करते हैं। हम लैंगिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, हम यौनिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन हम लैंगिक यौनिक एक ही मंच पर कैसे महिला पुरुष व्यक्तियों के राइटर्स मीट कर सकते हैं? तो वो तो भाषा के आधार पर, जैसे बहुभाषी करके भी इसके पहले होते हैं। नहीं तो हम जब अपने वजूद पे बात करेंगे तो इधर में लिखा डिसेबिलिटी राइटर्स मीट, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 को देखे तो हम बोले कि ट्रांसजेंडर शब्द को भारत सरकार ने ले लिया, लेकिन कौन यहां पे ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, वो कौन सा ऐसा कहानी है, कौन सा प्रभाव है? तो वो प्रभाव, वो मन में प्रभाव है कि हमको एक संस्कृतियों का द्वंद है कि हम पश्चिम संस्कृति, लेकिन हम नहीं पश्चिम मानती, क्योंकि यौनिकता यौनिकता है, लैंगिकता लैंगिकता है। वो न पश्चिम है, न पूर्व है, न उत्तर है, न दक्षिण है। वो सब जगह है, गांव में भी है, शहर में भी है, हर जगह है। तो अभी हम अपने वजूद का जो संघर्ष है उसको जरूर स्थापित कर पाए, क्योंकि हमारे ऐसे व्यक्तियों के यार में देखो तो मतलब आप मोहिनी को देखे, अर्धनारी को देखे, ईला को देखे। हमने अगर पढ़ा तो एक देवदत्त पटनायक को पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि मतलब वो ऐसा लिखे, लेकिन वो भी यौनिकता के जो स्थिति प्रभाव में है वही में है, लैंगिकता के प्रभाव में वो नहीं है कि लैंगिक पहचान के अनुसार। तो हम गूगल करते हैं, टाइम हो गया, बस हम 3 मिनट 3 मिनट तो वो पहचान को लेकर के वो अपने तरीके से ये करते। तो ऐसा क्यों है? मतलब कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में स्थापित है कि स्त्री शरीर के पुरुष भाव को, अब पुरुष शरीर के स्त्री भाव को, वो उसको 34 नंबर पेज में, केसी की वृत्ति में और सभी जगहों पे है। वो क्यों ऐसा आता है कि भरत मुनि आते आते बीच में खत्म हो जाता है, और हम नाटक करने वाले तब हम
अलग अलग तरीके से उसको होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी और इस तरीके से देते हैं, लेकिन जो हमारा संस्कृति का अवधारणा है उसको हम खत्म कर देते हैं। ये कौन से समय में ऐसा हुआ? ये 1000 साल का ये है कि ये ब्लैकआउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हुआ, क्योंकि इस तरीके के धार्मिक संस्कारों के व्यक्ति थे जो इस तरीके की पहचान को स्वीकार नहीं करते थे। तो वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, वो किसी एफेमिनेट पर्सन को जबरदस्ती सर्जरी करके अपने घर में रखना, उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाना, और उसको हमको लिख करके देते कि दैट वाज द प्रिविलेज। बट हाउ इज इट प्रिविलेज? हमने सर्जरी नहीं किया, हमने अपना शरीर का जो पुरुष यौनांग है उसको अभी भी रखा। तो क्या मैं एक औरत नहीं हूं? मैं एक उस पहचान के संघर्ष में जो जीवन का है वो नहीं पहचान को रख सकते हैं? तो अगर रख सकते हैं तो वो पश्चिम भाव में भी, और जो पुरानी संस्कृति भाव है वो सब जगह हमारा मौजूदगी है। तो इसको कैसे लोग समझेंगे? तो लिखावट में आना आवश्यक है। जो भी साहित्यकार, व्यंग्यकार, मतलब हम तो आइडेंटिटी को लैंगिकता के तो कॉमेडी के भाव में ही देखते हैं। मतलब कहीं पे भी देखो, पिक्चर में देखो, ये में देखो, कहीं पे भी उसको कॉमेडी मिमिक तरीके से पेश किया जाता है। क्यों नहीं किताबों में ऐसा परिवर्तन हो रहे हैं कि हम समुदाय को सामुदायिक भाव से, पहचान को पहचान भाव से, और लैंगिकता और यौनिकता को एक ही मंच पर अगर देना है तो वो उस तरीके से प्रभावित ना हो कि बिस्तर जो बाजार में ले जाने वाले हो वो अपनी कहानियों में व्यस्त हों और हम अपने जीवन के संघर्ष में व्यस्त हों, जो हम रोक भी नहीं सकते हैं। मैं जिस दिन पुरुष शरीर रहते हुए, जिस दिन स्त्री सामाजिक पहचान के कपड़ों को पहनती, उसी दिन से हमारे ऊपर टारगेट होता। हम अगर नहीं बताए, हम कपड़ा नहीं बदले और हम नहीं बताए तो हमारे ऊपर कोई टारगेट नहीं होता है। सो देन इट इज वेरी नेसेसरी कि सबकी आवाजें बुलंद हो, लेकिन हमारी आवाजें भी एक अलग वजूद के साथ बुलंद हो, और ये आवश्यक है, सभी जगहों पर जाएगी और हम लिखते रहेंगी और बोलते रहेंगी, संघर्ष को आगे रखते रहेंगी। जिंदाबाद साथियों। Thank you so much, Reshma Prasad ji. That was a very moving, I must say, very personal, and also it was very in-depth. Thank you so much for that. Particularly when you told about the lives of trans men. Yes, the lives of trans men is also one of the very marginalized. And when we talk about the body identities, body politics, I remember reading Revit Emma's book, A Life in Trans Activism, where she has brought the life stories of trans men. That was one of the very first books in India, which actually she has lived with them. She has sons. She is the mother of. That's a relationship that was created, but still very authentic, very real. She has so many friends from the trans men. Like me, I also have so many friends from the trans men. But she has so many sons as well. And she has seen the in-depth struggles and relationships of trans men as well. And particularly, Reshma ji was talking about the ground realities of being a queer person, of being a transgender person, of still staying strong and bold in spite of you being judged for what you wear, how you walk, of your femininity, your feminineness, your womanhood, and all that. Thank you for that, Reshma ji. And what a spectacular event this has been, with various perspectives coming from trans, gender fluid. Yes, of course, coming from trans, from gay, from lesbian, from gender fluid perspectives. And we all touched not just our community's lives, we also touched the entire spectrum people. And as sexual voices like Nevish, for the first time we hear that
in Sahitya Academy. And that is so important because we don't have too many people from within the LGBTQIA spectrum. We don't have too many asexual people coming out, particularly in literary circles and contributing for Indian literature, queer literature, from the asexual feelings and life. And that, with that, I think this becomes a very complete and very emotional and also a very important panel in this year's Sahid Academy. And I'm very, very thankful to the Academy for choosing this topic, LGBTQ literature of India, reflections on the past 4 decades. Even though the topic was about the past 4 decades, we also spoke about our personal experiences, our literature, and we spoke about the ground realities, the people who are voiceless. We all, the entire panelists, we all spoke about on behalf of them, for their lives, and for the future. Because every trans person, every gay man, every lesbian woman, and every asexual and gender fluid person in this country should be feeling safe, should be feeling proud. And even though we have suffered so much because of colonization, particularly the British, when they introduced in 1871, when they introduced the Criminal Tribes Act, and in the last century, when they introduced Section 377, the LGBTQI community has been a victim for a very, very long time. Particularly, the Criminal Tribes Act almost criminalized 33 communities from the very marginalized groups, including the gypsies, the transgenders, the street dancers and entertainers and all that. In that comes the eunuchs also, that is the transgender community also. And we were penalized, we were arrested, and that was the beginning of the decline of this community. It was because of colonization. And the legalization of the transgender community in 2014, on April 15, 2014, has led to many possibilities of opportunities of economic freedom, inclusion in our families, even though that is a very long way to go, and literature, the contribution into literature, the workforce into corporates, and so many aranas and avenues have been opened. And Sahitya Academy has also opened its doors for us. And that is very beautiful, because these are not just the end of discussions. These are the beginning of discussions of queer poetry, of queer writing, short stories, novels, and much more. Thank you so much to the audience, because I see 100% involvement in each one of you in listening to all our panelists. And I would like to, for any opinion you all have or any feedback you have, we just have 1 minute to spare. If any of you would like to talk for 1 minute on this panel, you're free to talk. Yes, you and you, only 2 people. Yes, Sanjay, you also want to say. बेसिक हम क्या हैं, तो वो सत्य के साथ में परोसी जाए तो ही स्वीकृत होती है। सत्य को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक जितना भी कोई साहित्य पढ़ा है, जितना ये पूर्वजों को सीखा है, तो मुझे लगता है किसी न किसी कारण पर उन्होंने अपने आप को चेंज करा। जैसे कि हर मतलब ट्रांसजेंडर की स्टोरीज हम जब पढ़ते हैं, बहुत पौराणिक स्टोरीज पढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर पढ़ लीजिए, शिखंडी पढ़ लीजिए, ब्रंगला पढ़ लीजिए, कुछ भी आप पढ़िए, तो उसमें एक पर्पस होता है, कॉज होता है, और उस कॉज के तहत वो काम किया जाता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि वो कौन सा कॉज था कि आपने साड़ी पहन ली, तो मैं कहूंगी कोई कॉज नहीं था, सत्यता थी जिसको परिभाषित करके मैंने वेशभूषा धारण कर ली है। तो इससे सत्य था। जब तक मैं अबोध थी, मैं स्त्री ही थी। जब तक मैं अबोध थी, मैं स्त्री थी। जब मुझे ज्ञान मिल गया तो मैं हिजड़ा बन गई। तो ये ज्ञान जो परोसा गया था समाज के द्वारा, वो हिजड़ा था, वो गंदा था, वो छोटा था, वो बहुत ही संकुचित था। आपने ऐसा ज्ञान एक बच्चे के मन में डाल दिया, सिर्फ उसकी चाल ढाल देख के, उसकी ऑथेंटिक नेचर देख के, उसका नैसर्गिक व्यवहार देख के आपने उसको टैग करा कि वो हिजड़ा है। और फिर हम पूरी जिंदगी ये लड़ते रहते हैं कि हम
हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, और हम क्या है, क्या हम हिजड़ा है? तो बात तो ये नहीं है, हम बात करते जब हम इनोसेंट चाइल्ड थे, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल ऑथेंटिक जब हम थे, तो हम थे तो या तो हमने अपने आप को स्त्री माना होगा या हमने अपने आप को पुरुष माना होगा। और जितनी स्टोरी हमने आपसे पहले पढ़ते रहे, उसमें किसी ना किसी कारणवश लोगों ने अपने आप को चेंज करा, वो काम किया एंड देन सेटल हो गए। अब रेवती अम्मा जी ने एक चीज लिखी तो उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक लिखी कि मैं ऐसी थी, और क्योंकि मैं ऐसी थी तो उस जगह वापस आने के लिए, मतलब वो महिला मानती थी अपने आप को, और महिला से महिला बनने तक का सफर एक्चुअली में कितना पेनफुल था, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक महिला थी बचपन से, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की थी, महिला ही थी, लेकिन एक महिला को अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज में फ्रीडम के साथ बोलने के लिए कि मैं महिला हूं, उस बेचारी को पूरा एक मतलब 4 दशक तो वो लिखे, 5 दशक उसने बिता लिए अपने कि मैं महिला हूं, और आज भी प्रूफ कर रही है मैं महिला हूं। तो ऐसा ये जो आप लोगों ने लांछन लगा दिया है कि हम जिंदगी भर और मरते दम तो प्रूफ करते रहते हैं, तो ये गलत है। अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि हम मर जाएंगे तो हमारा रिचुअल जो होगा वो मर्द के रूप में होगा या पुरुष के रूप में होगा, या धार्मिक शास्त्र अपने आप को बदलेंगे कि हिजड़ों का रिचुअल कैसा होगा, लेकिन जब हम मर Thank जाएंगे you so तो much, रिचुअल जो होगा Sanjana. लड़का लड़की से ही होगा। तो वहां भी साहित्य को जोड़ना चाहिए फिर। Thank you, dear. Thank you so much. बच्चा था क्यों ये लड़का औरत का तरीका ही बात है, अभी हम लोग पूरे औरत बन गया, ये औरत क्यों मर्द के तरीके बात है। Thank you. And you have a comment? मैं इसमें एक शब्द को, बस एक शब्द को जोड़ूंगी। After him. Yeah. Yeah, you speak. ये जो हिजड़ा शब्द है वो फारसी शब्द है, और गांव के किसी कोने में जाके देखो, आपको एक 5 साल का बच्चा भी बोलेगा। ये बहुत पेनफुल है। मैं Yes. स्टेशन पे खड़ी होती, मैं बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग दे करके जा रही हूँ, और कोई पीने वाले 5 साल का बच्चा आकर के मुझे बोलता है, "ऐ जड़ाई जड़ाई।" Oh my God. सो यू नो कि ये शब्द जो फारसी आया, और वो इंडिया की It comes from so many centuries of conditioning, इतना no? जहर भरा है कि वो फारसी मेरे इस ये में तीर की तरह पड़ा है। Very true. That comes from years and years of conditioning of homophobia, of course. A comment from you, please. Yes. मैं राघवेंद्र हूँ जी। मतलब कि ये दुर्भाग्य है, सिर्फ देश का नहीं, मतलब भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का, कि जो LGBTQ हैं वो लोग जो है एकेडमिक में नहीं है। हम मेन स्ट्रीम एकेडमिक की अभी बात में बात करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो एकेडमिक में ही नहीं है, वो सर्विसेज में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है। और इसके लिए यूएनओ कई सारे प्रोग्राम बहुत पहले से कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई सारे प्रोग्राम कर रही है। इनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, अभी सो कॉल्ड भी टर्म यूज हुआ है और वो सही भी है, कि हम उनको मुख्य धारा, मैं खुद से एक बार एक ट्रेन में एक लोग से मिला था जो मतलब ताली बजा के मांग रहे थे, उनसे मैं बात किया इनके इशूज के ऊपर, तो वो बोल रहे थे कि हमें जो मेन समाज है ना वो स्वीकार ही नहीं करता है, इसलिए हम संकुचित रहते हैं या यहाँ रहते हैं। अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे अभी स्टार्टअप वगैरह कई सारे इवेंट्स चले हैं, अगर इसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे स्ट्रीट फूड्स वगैरह हैं या स्ट्रीट वेजिटेबल, मतलब वेंडर जो वेंडर के वेजिटेबल का है, या ऐसे कुछ चीजें जो थोड़े मोड़े प्रशिक्षण दे करके उनको की जा सकती है। प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा अगर उनको दी जाए, प्रौढ़ शिक्षा। No, that's okay. That's okay. ठीक है, प्रौढ़ जो No, that's a very typical. प्रौढ़, हाँ, प्रौढ़ शिक्षा का प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अगर उन लोगों को शिक्षा दी जाए तो शायद इनका बेहतर स्थिति हो सकता है। Okay. Okay. So he's saying that why don't trans people go to work? Is it so? अभी नहीं सुन रहा हूँ actually. Yes. वर्क है ना, वो खुद से, वो जो उनका ओपिनियन था वो हमें ये बताया कि हम इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसलिए हम वहाँ पे रहना चाहते हैं। उनका पिक्चर के போறாங்களே ட்ரெயின்ல அவங்கள मंदी पिक्चर के சொல்றாங்களாமா, உங்களுக்கு வந்து நாங்க காய்கறி கடை வச்சு தரோம். Oh, ஆனா அவங்க வரதில்ல. சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நீங்க ஏன் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன். Oh. Sir, you understand English, right?
You understand? Are you rich or poor? Or what's your economic background, if I may know? Middle class, okay. Have you helped any transgender person so far? No. So I think you don't have the ability to do it, right? We all just talk and we don't do it actually. Without even knowing, I mean, there forget about, for 1 second, forget about transgender people begging and doing sex work. There are thousands of women begging and doing sex work. Children are forced to do sex work and begging. Uh, in this signal, in other ways and everywhere, why don't you judge them and why don't you give work to them? Why don't you tell them, go for vegetable vending, go for this job, go for that job? Why do you want to talk only about transgender people? Yes. Only that answer. कल्कि जी ने हमें बहुत बताया है कि 1000 में 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जेंडर माइनॉरिटीज और सेक्सुअल माइनॉरिटीज होते हैं तो सभी लोग भीख नहीं मांग रहे हैं कुछ लोग अपने ये संघर्षों से बाहर निकल करके लड़ रहे हैं जीविका के संघर्ष के साथ हर एक संघर्ष तो आपको समझना होगा कि आप ही के बीच में आप ही जैसे लोग डॉक्टर है इंजीनियर है और वो नहीं सामने है क्यों है इसको समझना Yes. I would like to say on the theoretical paradigm, this is a very exclusionary kind of a politics that only trans should write on trans. Yes. It is saying that, you know, it's a very different kind of academic marginalization, which I say I've also faced as a straight woman writing on queer people, right? So I think unless we assimilate, unless we take other voices also, it is saying that a man cannot write about feminist issues or an upper class person cannot write about Dalit. So it is, if you are associating with the writings only identity politics, I think it's a very fallacious assumption. I think the trans community should be open, that the other people should also be able to understand their pain. Should similarly, as a straight scholar, I should be given enough opportunity to understand the pain of the other people. As I'm giving the right to the men to write about feminist issues, or the upper caste people write about the Dalit oppression. So I think as All right. Thank you, Kuho. I understand that perspective of you and I acknowledge that. But each one of us have our own opinion and our own personal experiences in expression of our lives. So thank you for sharing that. On that note, I'd like to invite you for the vote of thanks. Thank you. इस डिस्कशन से एक बात तो सामने आ गई कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सो आप सभी स्पीकर्स का, चेयर का हृदय से आभार कि आप सब ने आज इतना इंसाइटफुल, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन किया एंड थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट्स। अभी हम चाय के ब्रेक के लिए रुकेंगे और 4:30 बजे दूसरा सेशन शुरू होगा और आप सभी स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अप्रोच द रिसेप्शन, यू मे रजिस्टर एंड देन गेट योर बैग्स। Yeah, thank you so much. Thank you. Beautiful introduction. Thank you. Lovely hearing you all. Yeah, so you may all stand for a group. You have given the ID cards to these people. I think there are other ID cards.
में से ऊपर हैं समीर तंती जी, श्री जातो जी, अश्वनी कुमार, यतीन्द्र मिश्रा, सी नागन्ना, के श्री कुमार, गायत्री बाला पांडा, मोहन हिमांती, sorry, my bad, Mohan Himthani ji. So we have got 3 speakers. We are waiting for the chair. As soon as the chair appears here, you're here, sir. Prabha Verma. Ah. Okay, great. So अभी जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ हम सेशन आरंभ करते हैं as because already 4:30 बज चुके हैं, फिर समय कम रहता है. So namaskar and good evening. A very warm welcome to the last session. लल डेड सभागार में आप सभी का स्वागत और आज के दिन का ये आखिरी सत्र है जिसका शीर्षक है मेरे लिए कविता का अर्थ व्हाट पोएट्री मीन्स टू मी और इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं प्रभा वर्मा जी. सर मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रेस द स्टेज एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम. Prabha Verma ji is an eminent Malayalam writer and journalist, and he has published more than a dozen collection of poems, 3 novels in verse, 6 books on the contemporary socio-political milieu and literature, 8 collections of essay, a study on media, a novel each in English and Malayalam, 2 scripts, a travelogue. He was the vice president of Kerala Sahitya Academy. He has written lyrics for many films that won him various state awards. He is a recipient of Sahitya Akademi Award, Kerala Sangeet Natak Academy Award, Film Award for Best Lyricist, among others. Can we please bring our hands together for the chair of this session? अब मैं अपने स्पीकर्स को निमंत्रित करना चाहूंगी. गायत्री बाला पांडा, प्रतिष्ठित ओडिया कवित्री, कथाकार, आलोचक, निबंधकार, शिक्षाविद और संपादक हैं. आपने अब तक 28 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 20 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, कहानी संग्रह और निबंधों का एक संग्रह शामिल है. आपको कविता संग्रह दयानदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक अन्य कविता संग्रह ज्ञान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, राज्य का युवा पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. आप व्यापक रूप से प्रशासित ओडिया साहित्यिक पत्रिका अन्या की संपादक हैं. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मोहन हिमथानी जी, वो अभी थे यहाँ पर. के श्री कुमार जी, आपसे स्वागत है कि आप मंच पर आइएगा. के श्री कुमार केरल के रहने वाले एक सक्रिय कवि हैं. आपकी काव्य यात्रा 5 दशकों की है. आपके 11 कविता संग्रह हैं और आपने अंग्रेजी से मलयालम में 2 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है. इसके अलावा आपने लेखों के 3 संग्रह प्रकाशित किए हैं. आपकी काव्य यात्रा सीमाओं के पार है. आपने दुनिया भर के 18 देशों की यात्रा की है. आप केरल विश्वविद्यालय से सर्वश्रेष्ठ कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, महाकवि कुमारन आसन पुरस्कार के साथ अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर. अब मैं स्टेज पर न्योता दूंगी मोहन हिमथानी जी को. कृपया करके मंच पर आइएगा. आप सिंधी भाषा के सुपरिचित लेखक, अनुवादक, प्रसारक हैं. आपने ऑल इंडिया रेडियो के बाह्य सेवा प्रभाग में एक अनुवादक और उद्वेशक के रूप में और भारत सरकार से एक दुभाषीय के रूप में कार्य किया है. आपके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं. आप अखिल भारत सिंधी बोली साहित्य सभा के कार्यकारी सदस्य और दिल्ली सरकार के सिंधी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर.
अश्विनी कुमार जी हमारे बीच में हैं? यतीन्द्र मिश्रा जी? श्री जातो जी? समीर तांती जी? सी नगन्ना जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके प्लीज मंच पर आइएगा और जब तक आप मंच पर आते हैं मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। सी नगन्ना जी तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद अध्ययन के पूर्व प्रोफेसर, कवि, साहित्यिक आलोचक और अनुवादक हैं। आपके कन्नड़ और अंग्रेजी में 68 यानी 68 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप भारतीय ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी के साथ साथ कर्नाटक साहित्य अकादमी की कन्नड़ परामर्श मंडल के सदस्य रह चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने आपको वर्ष 2023 में साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित राज्योत्सव पुरस्कार से भूषित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। So with this, I will hand the stage over to our chair. So two of the speakers are still not present here. So as they come, we'll have them on the stage. Namaskar, Sahitya Academy. Here on the dais, we have a galaxy of writers. Writers belong to various parts of our country, representing various states, representing various languages. Actually, these writers are the one who give us Indian literature. In that sense, they are Indian writers who write in different languages. I, at the outset, would like to welcome my fellow writers who are here on the dais. I have heard a definition about poetry. Would you please close that door? It would be a distraction, the sounds that comes from outside. In a letter to Robert Bridges, Hopkins once said, "The poetical language of an age should be the current language heightened." What does it mean? It means the poetic language is not written in current language anywhere in the world. It is, of course, an ornamental language. It is something that gets heightened because of the sublimity that is associated with the writer. Yet, there is another saying. Actually, it was put forward by Timothy Steele, a renowned critic and poet. Timothy Steele once said, "All the fun is in how you write a thing." Fun in the sense wisdom. All the fun is in how you say a thing, how a particular thing is uttered, how a thing is put forward, the way in which it is put, the way in which it is uttered, it matters a lot. Usually we used to say, Jesus created wine out of water. This is the common parlance. This is the common way in which we describe things. But Byron said it in a different way. Byron said, "Water looks towards the face of its creator. Seeing that face, its face blushed." The face of water blush on seeing the face of its creator. What else? The creation gets more than that. So on seeing the creator, the water gets blushed. That is the way in which Byron said this. So the question is whether a poet, or for that matter any person, can say it in a different way. That is actually a touchstone so far as I am concerned. That when we rub it on that touchstone, we can know whether this is poetry or not, whether this is common parlance or not, whether
the common saying has attained a level of sublimity or not. This is the criterion with which I read poems. Of course, it is with immense happiness that I preside over this seminar that deals with the subject, what poetry means to me. We know pretty well that the meaning of poetry varies from person to person, reader to reader, and writer to writer. It is true that it varies from time to time too. Writers, writers have been seeking the meaning in their own ways and trying to add value-added meaning to the concepts through a variety of ways, through various styles and ways of writings. Yet the question will continue to confront us. The question is whether we can find an originally our own meaning of poetry. If one succeeds in this, one can conclude that he has been able to mark his imprint of original genius in the history of poetry. Only very few people could do it, as all of you are aware. Right from the beginning of history of literature, we have heard the spontaneity theory, which gets elucidated in the definition spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. We have heard that. It is true that a moment will come when a bud cannot resist the inner pressure and retain its identity as a bud no longer, but to blossom into a flower. A moment will come when one cannot hold the pressure of his or her emotions no longer and break himself into tears. A moment will come when the steam cannot remain inside but to blast, breaking the container. So is poetry. It too has to roll down from your inner eyes as tears when the mind attains the boiling point. Accepting this, I would ask you, how was that Dostoevsky wrote Crime and Punishment? Was it the outflow of an inner urge? No. He wrote that work only to save himself from being imprisoned. Dostoevsky borrowed money from his publisher and put it for gambling. When everything was lost and pressure mounted on him to return the amount, he hurriedly wrote Crime and Punishment and fetched money. Same was the case with the creation of Old Man and the Sea. Hemingway could not hand over the fine print to the publisher within the stipulated time, within the agreed time, within that time limit. He kept on editing, and editing. When the redrafting continued indefinitely, the publisher threatened him with the words, "If you continue to do this, I will ruin your career." Hemingway hurriedly completed the work and passed on to the publisher. I am reminded of the dreamy creativity of Coleridge, who just got up from sleep and started writing Kubla Khan. I am also reminded of the fact that Mahagavi P., the poet laureate of Malayalam, wrote Kaliyachan, his masterpiece, out of the compulsion that he has to recite it the very next day at All India Radio for Republic Day broadcast. Against this backdrop, shall I put this question? Can we conclude that Dostoevsky and Hemingway, who wrote under compulsion of circumstances, were inferior to Coleridge, who fanned a spark from the dream into a flame of poetic creativity? Can we conclude that Kaliyachan, written out of the compelling needs of circumstances, is inferior to Kubla Khan, which bloomed from a dream? I am afraid we can't. Now I remember a quote from Srinivasa Iyengar. He said, "All the literature is about man's relation with himself, society, and the unknown." I underline the word "the unknown." I emphasize on that word. When I do it, I am not emphasizing on its spiritual connotation, but stressing on the inherent meaning that offers vast vistas of hitherto unexplored realms of human minds. When we plunge into it, we become creative, regardless of the inner urge and physical circumstances. But the fact remains,
Great composers need great listeners. Great writers need great readers. Great literature sprouts in response to the call of great readers. The relationship between the writer and the reader, of course, is reciprocal. When a writer abandons an oft-treaded path and scales a new path of narration sans cliches, readers get elevated to a higher level, to a higher level of sublimity. Instead of saying, before the 10 long years of sorrows, one can say, a grief ago. The new coinage marks a shift of ambience in the minds of the reader. This technique is called collocation shift. There will be a nodal point without touching it. If you touch its collocation point, you succeed in triggering off a fresh vibe in the minds of readers. Stylostatistics, recurring metaphors, foregrounding, etc., also are the ways with which one can refresh the minds and the sensibilities of the reader. That is the way in which we can move away from cliche. I do remember my childhood days when I got unknowingly attracted towards the mantras and slokas that my father used to chant in chaste Sanskrit. I used to sit spellbound as if in a possessed manner when he chanted. I know that it was those slogas that brought a bridge before me to walk across to the sublime realm of literature. The cultural atmosphere of my village, the presentation of classical art forms, the local library that initiated me to Vyasa, Kalidasa, Shakespeare, and the others, and my close association with the progressive movements also played a role in molding me into what I am today. It is not that one goes in search of poetry, instead, poetry comes to you. Thus, it came as a very natural realization that poetry is my mode of expression. I firmly believe a poet is bequeathed with a highly noble task. In ancient Rome, that was the words used to denote poets. That meant they were some sort of an oracle. Poets do have such prophetic quality. In my early days as a poet, I have gained a lot of confidence and inspiration from the words of a number of renowned poets and writers of the time. From the beginning, many well-known critics also have showered kind words about my works, and those too have helped me a lot in this regard. Often, from various aspects of one's life, some themes and motifs strike you so hard that you cannot help but write them down. There is always this question as to why do we write? Way back in the 1970s, while I was a high school student, a towering literary personality had come as a guest in our school when it was celebrating its anniversary. While all of us were in the headmaster's room chatting with the guest, a teacher from our school shot a direct question at him. Why do you write? The answer from him was, if you don't ask me, I know. If you ask me, I know not. Though years have passed, I think the answer likely to be given by a contemporary writer too will not be in any way different from what he had said several years ago. I too am not an exception. Writers write. Is it for the recognition which may or may not be conferred on them by those who are in power? No, not at all. Even if no one is there to recognize, writers will write. Was it for laurels that Valmiki wrote? Did Vyasa expect any award when he penned the Mahabharata? No, writers write. They have no option but to write. Tears roll down. Is it for gaining something? Flower blooms. For what? Skylark sings. For what? A cloud has no option but to rain. A bud has no option but to blossom. A sorrowful heart has no option but to weep. Poetry also happens like this. There are certain things that happen in this world without aiming at any objective, but we fail to observe it. That is why these sorts of questions are
repeatedly put before writers at various junctures of time. However, writing has a role to play. It makes our lives livable. It converts Homo sapiens into human beings. It makes this earth a little more inhabitable. It soothes the minds that are wriggling in pain. What else should poems do? There are various stages in the life of a writer. There should not be a monotony with the progress of time. There should be several inner explosions, often at many junctures. Such explosions take you to a higher level which is not yet experienced by any other. One should undergo such a process of self-rejuvenation constantly. Then only the writer can stand the test of time, or at times walk even ahead of time. Every poem is a letter written to a person of the same wavelength. Even though the address is not mentioned, the letter reaches the target. A writer should be able to open up a space inside the minds of the readers. That itself is what I am, for what I am. That itself is what I aim for when I start writing. Here I would like to express my apprehensions over the setback that the poetical language suffers during the decades of modernity. I just mentioned the saying of Robert Hopkins, what he wrote to Robert, what Hopkins wrote in a letter addressed to Robert Bridges. I mentioned that. But one miserably fails when we come across the new generation poems which fail to attain the level of sublimity. When one says that also, as I have mentioned about Byron and all that, often many poems are formed inside the mind, but it takes a deliberate effort from one to sit and write those down. I mean, the external task or the actual physical process of writing is as important as having internal imagination. This, in my opinion, is perhaps the hardest part of writing a book. India is a land rich with an ancient tradition and has such wealth of languages and stories. I have never considered modernity as a total break from tradition. Instead, it should exist only as an extension of tradition. Great poets like W.B.H. Cesar Vallejo took a lot of energy from ancient traditional folk cultures. A move should be on to link modernity back to tradition. Only then can we have a literature which is fully equipped to confront the cultural invasions that are on towards us, crossing the barriers of nation states and the ethnic and cultural constituencies of the nation states. If you do not have any regard for your language, ethnicity, and culture, you will easily become vulnerable to any type of invasion that is unleashed by imperialism. In this context, you can make the pen also a weapon. It will be possible only if the pen instills some sort of a self-respect in your minds with regards to your language, literature, culture, ethnicity, etc. Thank you all. Thank you, sir. Moving on to the discussion, which is titled What Poetry Means to Me. After our chair spoke, I would like to invite Mr. C. Nagannaji. Kindly come here and share your thoughts. Mr. Chairman and fellow panelists, as Matthew Arnold said long back, more and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, to sustain us. He further said that without poetry, science will appear incomplete.
In fact, Arnold quoted Wordsworth when the latter said, "Poetry is the impassioned expression which is in the countenance of all signs." We can agree with Wordsworth's very reassuring definition of poetry, that it is the breath and finer spirit of all knowledge. If poetry, Kuvempu, the poet laureate in Canada, had said in 1965 in an interview given to his son, a distinguished writer, Purnachandra Tejaswi, that his generation of writers, that is Kuvempu's contemporaries, had the habit of reading. Here, Kuvempu meant that reading took them to the poets of several centuries back. Referring to Purnachandra Tejaswi's generation, Kuvempu indicated that reading has become somewhat superficial. In fact, Kuvempu said that his generation of writers were never given to the bravado that they were the pioneers and creators of an altogether new paths and new modes of expression. Whether it is understanding poetry or acquiring deep scholarship, there will be at least half a dozen extraordinary poets, critics, and scholars at any given period in the literary history of a language. But still, the question remains why we normally take our contemporaries for granted. The answer is quite plain and straightforward. It is the human psychology that it underplays the importance of our contemporaries as we want to safeguard our creativity amidst them. But we should never distance ourselves from contemporaneity. The manner in which contemporaneity is grasped differs from individual to individual. Even without reading the literary works of our contemporaries, in a way we can grasp what they are working at by exposing ourselves to other disciplines. When a researcher sets out to do something, he ought to know both the tradition as well as contemporaneity. The poetry that is being created on social media nowadays is striving to express the inexpressible rather easily. These poets have never honored the time honored observation of T.S. Eliot that poetry is the raid on the inarticulate. These poets want to articulate anything and everything as they seem to achieve incessant communication with their audiences. They may not have the accessibility to the privileged medium, therefore, they have opted for the social media. The traditional privileged medium requires a lot of preparation, whereas the social media facilitates quick communication and probably instant response. This is the result of an individual's urge to be seen, which becomes an addiction, so to say. The question of charlatanism is as old as Napoleon Bonaparte and the critic Saint Beuve. Napoleon, it seems, asked, "Where is not charlatanism?" Quick came the reply from Saint Beuve, "Yes, in politics, in the art of governing mankind, that is perhaps true, but in the order of thought, in art, the glory, the eternal honor is that charlatanism shall find no entrance. Herein lies the inviolableness of that noble portion of man's being." Unquote. Matthew Arnold agrees that in poetry, thought and art is one. It is the glory, the eternal honor, the charlatanism shall find no entrance, that this noble sphere be kept inviolate and inviolable. Juxtapose this idea of poetry with the current tendency to treat poetry as a performing art. At best, social media can be used as a news hub and medium of communication, and surely poetry should lie outside the domain of social media. Most of the social media poets think that they don't need the knowledge of a literary tradition. They seem to entertain the idea that it is the business of the college and university teachers to learn about the tradition as they have to teach it to their students. But what they sorely miss is that they cannot depend entirely on their individual experience, which ought to be augmented with wide reading. Unless their writings have the essential support of reading, they will vanish after the bubbly existence.
While dwelling on the topic of tradition, we need to be aware of the existence of not one monolithic tradition, but several traditions. In our times, that particular class which wields power would automatically dictate the tradition that is dear to it, and it will try to plant it among the young through education. This imaginary tradition is more powerful than the police, the army, and other controlling agencies. Another thing is that the writers writing in a particular milieu will knowingly or unknowingly create a tradition they need. This has been going on since the beginning of civilization. As the critic, Kannada critic O.L. Nagbhushan Swami opines, at this juncture of Kannada letter, when 3/4 of a century has elapsed since attaining the independence, the downtrodden communities have embraced the Buddha, Basava, and Ambedkar and have moved on to receive into their fold Male Mahadeshwara, Manteswami, Junjappa, Dakkaladevi, and Jambava. This is how they have forged ahead to include those heroes who did not figure normally in the scheme of things in the realm of poetry. The new poetic tradition respects such poets as Kuvempu, Devanur Mahadeva, Lankesh, Tejasvi, and so on. The new poets accept the new pantheon or the new tradition and they correct it, they change it, they add to it something of their own. The poetry being created by the younger generation poets who are writing today may not sometimes touch my deepest core as my mind hankers after the works of a bygone era. But still, when I read something new, it is reading a work composed by another mind, misunderstanding the same, appreciating it, following it, rejecting it, perhaps. In one word, it is a composite activity that hence highly demanding. Just like a family, members of a writing community form a fraternity, a common blood group. Obviously, they can't be found in a hub. They are scattered, belonging to different segments of society and language registers. We instinctively like some poets and move away from some, and they too are likely to reciprocate in equal measure. Why poets have become dime a dozen nowadays is the question repeatedly asked. The answer is that people think writing poetry is easy. Actually, writing poetry is not easy. A creative work will not result if an individual expresses his experience, thought, emotion, responses, and reactions in a language that is natural to him or her. Poetry is an energy or power or strength that is acquired, assimilated, and inherited. One may pretend to have in possession such power, but it is extremely difficult to prove the possession of such a power. We are living at a time when we are intolerant of everything that demands on this development. This education values rote learning more than independent thinking, and hence it hardly promotes intellectual vigor and rigor. In any given period and generation, there will be both readers and writers. The writers ought to be readers. They are expected to build their own tradition. We read because we try to construct different types of writing. But we need not stop there. We read also because we derive limitless joy out of this process of reading. In our time, there is a pressure that we should read a particular type of writing. The appropriate reasons are also given for this compulsion. But there is a need to transcend such pressures and read what is the other, within quotes. Whether the classics or contemporary writing, we ourselves have to find out the method of reading. I'm acutely aware of the fact that the new generation is not alien entirely because they are a continuity of the older generation. The moment it incarnates itself as a new link, it gets separated from the older generation. But since it is a relationship representing the umbilical cord, it is quite organic and inalienable too. In that sense, the new poets are expressing the social concerns in a direct way, which is likely to be described as lazy and simplistic. But we can escape from the responsibility of guiding the younger generation by providing the proper tools of reading.
That will make us think twice before we castigate the younger generation, wielding the good old touchstone method of having in mind the lines and expressions of classical poets. No doubt the touchstone method is quite infallible in detecting the presence of or absence of high poetic quality. Aristotle profoundly observed that poetry is superior to history and consists of a higher truth and a high seriousness. It is true that truth and seriousness are the two elements that are an inseparable parts of genuine poetry. But because of the fragmentation of the human consciousness, the contemporary poets are unable to understand what is truth and what is seriousness. Lastly, the kind of poetry that can somehow garner truth and seriousness would be insured of currency and supremacy. Even though the contemporary audiences are not making deliberate and conscious choice of good poetry, because the audiences are also jaded and circumscribed by the contingencies. However, good poetry will prevail because of the instinct of self-preservation in humanity. Thank you very much. Thank you, sir. And now I would invite Shri K. Shri Kumar ji to kindly take the podium. Dear brothers and sisters, I am honored to address this esteemed assembly. This marks me first experience delivering a speech at the Sahitya Academy. I am delighted to the present topic, what poetry means to me. Sometimes my mother tongue Malayalam will come. You can, without any cost, you can follow the great Dravidian language by Malayalam. 1970 അവസാന കാലങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ അനുഭവങ്ങളുമായി ഒരു തുണിസഞ്ചിയും തൂക്കിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കേരളത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു. അയാൾ ചന്തകൾ ചെന്ന് കവിത ചൊല്ലി, സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് കവിത ചൊല്ലി, അയാൾ പാരലൽ കോളേജുകളിൽ ചെന്ന് കവിത ചൊല്ലി, കവലകളിൽ നിന്നും കവിത ചൊല്ലി. In the late 1970s, a young man traveled the streets with a bag of books over his shoulder, his mind filled with verses, memories of experiences during the national emergency period. He boldly recited poetry in front of schools, markets, and public spaces, despite not being invited to share stages with esteemed poets. മഹാകവികളുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നു. I am that young man. ഞാനായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. Who passionately vocalized the unique struggles of humanity and nature. Poetry at that time was the fire in my eyes. കണ്ണുകളിൽ കനലുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് കവിത. Poetry at that time was the fire in my eyes, reflecting my innermost sentiments. I followed through by veins like a lava, feeling by creative endeavors. The verses deeply within me, echoing like a thunder, ഇടിമുഴക്കം പോലെയാണ് എനിക്ക് കവിത അനുഭവപ്പെട്ടു. They offered relief amid tears shed over the plight of his surroundings, like moonlight bathing a wounded soul. മുറിവേറ്റ ഒരു മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണോ നിലാവ് കുളിര് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് കവിത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.
As I journeyed through life's trials, poems became my faithful companions. വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തായിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് കവിത മാറി. Comforting me in moments of darkness and despair, നിരാശയുടെയും ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ, for me, poem was magnificent. And at the same time, poison at one breast and nectar on the other breast. ഒരു മുലയിൽ വിഷവും ഒരു മുലയിൽ അമൃതമുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കവിത. കവിതയുടെ ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറുകൈയിൽ പൂവും ഞാൻ കണ്ടു. കവിത എൻ്റെ മുറിവുകളിൽ ശൈത്യമായി, തലയിൽ തലോടി. Poetry stood, offering clarity amid confusion and drumming throats. Poem raised clearly at the time where thoughts madly saddened in the form of drum sounds. I saw poetry with a sword in one hand and flower in other hand. Poem bathed as winter to my injuries and as rain to my sorrows. Poetry rubbed gently over my head. On her lap, poem's eyes were filled with tears, and she accompanied me when I sang her loudly. What is poem to me? Poetry is pain. Poetry is my peace. Poetry is the bodiless, sensual music of substance. Poetry is sincerity. Poetry is faithfulness. Poetry is the successive suffering of my soul. കവിതയ സ്വസ്ഥത, കവിതയൻ സ്വസ്ഥത, പൊരുളിൻ അമൂർത്ത വികാര സംഗീതിക, കവിതയാത്മാർത്ഥത, കവിത വിശ്വസ്തത, കവിതയൻ പ്രാണനോവിൻ്റെ പരമ്പര. In challenging existential dilemmas, I found a deadlock. ഏത് കവിയും അയാളുടെ കാവ്യജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളിൽ ഏർപ്പെടും, തടസ്സങ്ങളിൽ. That was the biggest deadlock which I faced in my entire poetic career. I was not able to criticize the world, even though I am also a part of it. I found a solution to criticize the world, and that solution was my naked poems. It is different from the Telugu Digambara Kavidas. Naked poems are bold. These naked poems should be like bullets, challenging the status quo. I traveled long through the path. Some examples of naked poems. This is a book of naked poems which I wrote. Some examples. First, tea. No sugar to make tea. Very good. You may not get a diabetes. No milk to make tea. Excellent. No chance of cholesterol then. No tea powder to make tea. Wonderful indeed. Beverage is toxic. Better not consume. No water to make tea. Brilliant. Cholera and jaundice would not come to your way. What about tea then? All hail the imaginary tea. How beautiful. Age of evil. അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പഞ്ചസാരയില്ല, നല്ലത്, പ്രമേഹം വരില്ലല്ലോ. പാലുമില്ല, വളരെ നല്ലത്, കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിക്കില്ലല്ലോ. തേയിലയുമില്ല, വളരെ വളരെ നല്ലത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പാടില്ല. വെള്ളവുമില്ല, വളരെ 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 നല്ലത്, മഞ്ഞപ്പിത്തവും കോളറയും വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചായ എന്തതിശയമേ സങ്കൽപ്പ ചായ എത്ര മനോഹരമേ, ആഹ എന്തതിശയമേ സങ്കൽപ്പ ചായ എത്ര മനോഹരമേ. Another one, national anthem, ദേശീയ ഗാനം. My friend, can you please write the Janaganamana without any mistake to be given to any one of the newspapers with my name as compiler? In this present world, I am trying to watch the world from the shores of my Ashtamudi lake.
There is no space for spirituality in my poems. My poems are grounded on materialism. I am able to write only on my existence. As per my philosophy, soul is just an imagination. Soul does not know the magic of creative thinking. I can write only on the languages that are known to me. This materialistic reality has given me energy to travel deeply through poetry. Throughout of my journey, I have had the privilege of meeting esteemed literary figures, each enriching my understanding of the human condition. I met Amrita Preetham in Delhi, Narayan Surve, the great Dalit poet at Mumbai, Arun Kamal at Lucknow, Shankar Ghosh at Kolkata, and Gaddar at Telangana. I went to the home of Dostoevsky and saluted in front of his handwritten copies. Ultimately, my poem is searching into the depths of human sufferings. The subjects of my verses are human sorrows and problems of the essential components of humanity. I live in my poems and I die in my poems. At last, I would like to recite a few lines of my latest poem, Fatima Turuthu. ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം, രാത്രി വഞ്ചിയിൽ നിലാവ് കാണണം, പൂക്കളോട് പൂക്കളെ തിരക്കണം, രാക്കിളിക്ക് കൂട്ടുപാട്ട് പാടണം, കായലിൽ കിനാവ് കണ്ടു പായുമാ പായൽ മാലയിട്ട കൊപ്ലി മീനിനെ പൂനില വല വിരിച്ചിണക്കുവാൻ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. മുള്ളുവേങ്ങകൾ മഴപ്പെരുമ്പറ മുന്നണി ചെടിക്ക് ചൊല്ലിയാടുമ്പോൾ പട്ടണം പറന്നു കണ്ട പക്ഷിയായി ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. രോഗബാധിതർക്കിടന്ന് അലറുമാ കൂരകൾക്ക് കൈവിളക്ക് നൽകുവാൻ ജീവിതൌഷധം നിറച്ച സ്നേഹമേ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. അർദ്ധപട്ടിണി പതാക പാറുമാ ദുഃഖമൺപ്രദേശമാകെയൊപ്പുവാൻ നിദ്രവിട്ട ക്യാമറ കരുത്തുമായി ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. 100 പ്രാണികൾ വസിക്കുമാ സ്നേഹരാജ്യമൊന്ന് അടുത്തു കാണണം. കന്യകാത്വമുള്ള കാട് കാക്കണം. ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. ജൈവലാസ്യ വിസ്മയം പഠിക്കുവാൻ തൈകൾ കാട്ടും ആംഗ്യഭാഷ ഏൽക്കുവാൻ ചെങ്കരിക്ക് ചുണ്ടിൽ വച്ചിരിക്കുവാൻ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. ക്ഷാമവൻമുതലകൾ ജലത്തിൻ്റെ ആടകൾ ഉരിഞ്ഞു ദ്വീപിൻ ജീവനെ വായിലാക്കും മുൻപ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. പാറി വന്ന സെപ്റ്റംബർ മുകിലുകൾ 4 ദിക്കിലും കറുത്ത കോട്ടയായി തീക്കൊടുക്കകൾ ഉടയ്ക്കും അന്തിയിൽ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. പൂച്ചകൾ അനാഥരായ നായകൾ കാത്തിരിക്കും ഈർപ്പമുള്ള പൊന്തയിൽ രാത്രി മഞ്ഞു മാക്സിയിൽ വിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. വേനലിൻ്റെ മുഷ്ടിയിൽ കയ്യോന്നികൾ പാനശീലവും ത്യജിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാട്ടുമുല്ല വേരുണങ്ങി വീഴുമ്പോൾ ഫാത്തിമത്തുരുത്തിലൊന്നു പോകണം. ഭൂമിയെ പുണർന്ന കുഞ്ഞു പുല്ലുകൾ പൂവണിഞ്ഞ് തേനുറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാണനിൽ മുഖം പതിച്ച വേവുമായി
ഭാവനത്തുരുത്തിലൊന്ന് പോകണം. ദിസ് ഈസ് മൈ പോയം. താങ്ക് യു. थैंक यू सर। और अब मैं गायत्री वाला पांडा जी से कहूंगी कि वो यहाँ पोडियम पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं साहित्य अकादमी की हृदय से आभारी हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरे इस वक्तव्य का उड़िया से हिंदी में अनुवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी ने किया है, इसलिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ और आभारी हूँ मेरे भाषा के लेखकों के प्रति जो यहाँ पर उपस्थित है। आज एक ऐसे मंच पर जहाँ प्रभा वर्मा जी, सी नागन्ना जी, के श्री कुमार जी और मोहन हिमथानी जी जैसी शख्सियत विराजमान हो, जहां आप जैसे गुणी ज्ञानी और साहित्य प्रेमी उपस्थित हो, मुझे कुछ कहने में संकोच हो रहा है। अनर्गल वक्तव्य देने में मैं पारंगत नहीं हूँ, खासकर मुझ जैसी कविताई मानसिकता वाली इंसान जो आज तक खुद को संतुष्ट करने जैसी कोई कविता नहीं लिख पाई, भला वह क्या कह सकती है कविता के बारे में। कविता मेरे लिए क्या है, एक ऐसे विषय पर कहने के लिए कोई भी शब्द उभर नहीं रहा मन में आसानी से। कविता मेरे लिए सपने या विलास नहीं, बल्कि कुछ कुछ कर आकार लेने वाली एक यंत्रणा, एक पीड़ा, एक लाचारी है। कविता लिखना मेरे लिए शौक या आग्रह नहीं, एक अंतरंग आवश्यकता है जो ठीक मेरे सांसों की तरह है, जिसके बिना मैं सब हूँ, जड़ हूँ। कविता मेरे लिए स्वतः बहते आंसू है, जिनके बह जाने के बाद कुछ समय की राहत से मैं आमोदित हो उठती हूँ, पुलकित और जीवंत हो जाती हूँ। मेरे अंतर जगत का सूक्ष्म उद्वेलन मानो उड़िल जाता है कागज पर और कविता में तब्दील हो जाता है। बचपन में बहुत चुप और भावुक रहा करती थी, छोटे छोटे अनुभव को लेकर परेशान रहती थी, उदास और खोई खोई सी रहती थी, कभी पुलकित रहती थी तो कभी पीड़ा भोगती थी। अपनी भावनात्मक तिलमिलाहट से मुक्ति पाने के लिए कविताएं लिखती थी और इसी को उपयुक्त सर्वोत्कृष्ट माध्यम मानती थी। मुझे लगता है जीवन की नित्य नैमित्तिकता को सांत्वना में बदल सकती है कविता। पीड़ा में, प्रेम में, विरोध में भी होती है सांत्वना। 1 सितंबर 1881 में अपनी भाई थियो को एक पत्र में मशहूर चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने लिखा था कि मैं अब प्रकृति के आगे असहाय नहीं हूँ। आई नो लॉन्गर स्टैंड हेल्पलेस बिफोर नेचर। मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है। जीवन में कुछ कुछ घटनाएं और परिस्थितियां नाटकीय रूप से घटित हो जाने पर भी जब मैं कविता लिख लेती हूँ, तब उस शून्य स्थान से, उस एकाकीपन से आजाद हो जाती हूँ। कोई अभाव बोध नहीं रह जाता, लाचारी नहीं रह जाती, थकान नहीं होती, क्रोध नहीं रह जाता। शायद मैं खुद को भी लगातार सुधारने की प्रक्रिया में मस्त हो जाती हूँ। अपने साथ लगातार बोलना बतियाना कविता की वजह से ही संभव होता है। कविता गहराई और संभाव्य दोनों को चुंबकीय बनाती है। एक कवि अक्सर आम आदमी में छुपा रहता है, वो सामान्य रूप से दुनिया में चलता फिरता है, सामाजिक समस्याओं से विचलित होता है, राजनीतिक भय से मुकाबला करता है, व्यक्तिगत पीड़ाएं सहता रहता है। भय और भयंकर परिस्थितियों के साथ स्वाभाविक रूप से आवाजाही करते करते अंधत्व को भोगते चलते समय भी अपने भीतर समानांतर रूप से एक दूसरी दुनिया में रहता है, एक खतरनाक दुनिया जहां वह जड़ से जादूगर बन जाता है। भावुकता के कुछ नवीन आविष्कार उस जादूगर द्वारा ही संभव होते हैं। कुछ क्रांति उपजता है, क्रम तोड़ता है, क्रम तोड़ने के अदम्य साहस के खतरे के साथ वह कभी एकात्म होता चला जाता है। कविता प्रेम हो सकती है, विरोध हो सकती है, विद्रूप हो सकती है और विषाद भी हो सकती है। परोक्ष में सही, जब मुझसे यह कहा जाता है कि यह कविता ऐसे नहीं लिखनी थी, किसी और रूप में भी लिखी जा सकती थी, मैं समझ जाती हूँ कि
वो लोग मेरे कविता के द्रोह, क्षोभ और प्रश्न पूछने के साहस को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो डरते हैं। परंतु सबसे भयंकर, निष्ठुर, सत्य और दुस्साहसिक प्रश्न पूछना मेरे लिए तो निहायत जरूरी है। समाज की, राष्ट्र की पसंद नापसंद से परे है मेरे प्रश्न पूछने का अधिकार। भय को, विशुद्ध नम्रता को नहीं। यदि साहस को अपने कवित्व का उपादान नहीं बना सकती तो फिर मैं कविता क्यों लिखूं? और यदि मैं साहस पूर्वक स्पष्टता से अपने विचार रखती हूँ तो निश्चय ही उसमें कुछ स्वतंत्रता है। आप लोगों को या शायद किसी और को यह लग सकता है कि ये सारी चीजें तो पहले कही जा चुकी है या ऐसी कोई बात नहीं है जो अब तक नहीं कही गई है। पर मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भले ही यह लगे कि हर कथा या कहानी पहली कही जा चुकी है, किंतु सच्चाई तो यह है कि कभी किसी ने मेरे कहने के अंदाज में शायद नहीं कहा। इतनी ही है मेरे स्वतंत्रता। मैं जानती हूँ कि चुप्पी का कोई अर्थ नहीं। चुप रहकर शायद हम पक्षपाती होने का संकेत देते हैं। उस समय भी अपने अंदर टूटे फूटे तीव्र शब्द सुनाई देते हैं। तटस्थ कर रही होती है हमें हमारी वैयक्तिक सत्ता। दृश्य और अदृश्य जगत में चल रहा यह विरोधाभास बाहर नम्रता या साधुता या सरलता की परिभाषा बहस करने समय एक कवि क्रमशः खोने लग जाता है अपनी स्वतंत्रता, अपना अस्तित्व। यह चुप्पी किसी के लिए शांति के प्रतीक में तब्दील होते समय एक कवि के लिए यह आंधी की सूचना है। जिस आंधी में अपने तितर बितर हुए हिस्सों को समेटते हुए वह लगातार खड़ा करता है और उसको समाज के आगे आंधी से टूटे टुकड़ों को इकट्ठा करता है और एक खूबसूरत दुनिया का सपना देखता है। हालांकि दुख में होते समय भी मैं कविता का सहारा लेती हूँ और उस दुख से उबर कर आगे बढ़ जाती हूँ। हालांकि मैं छत बिछत होती हूँ, मैं आगे के लिए नई आशाएं बुनती हूँ। हालांकि मैं थकान महसूस करती हूँ पर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। हालांकि शुरू में मैं अकेली मानती हूँ खुद को, पर एक दिन शायद समवेत स्वर बन जाए यह सपना देखती हूँ। मैं कौन हूँ और दुनिया को किस नजरिए से दिखती हूँ, कविता उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कविता ध्वनि और छंदों की तमाम संभावनाओं का उन्मोचन करती है और मुझसे वह सब लिखवा लेती है जो शब्द में कहना कष्टकर है। जो खाली जगह सी सबको दिखाई देती है वहाँ काफी कुछ छुपा है, यह कविता मुझे दिखा देती है। कविता के जरिए मैं हर घटना की गवाह बन सकती हूँ और उन सब के बारे में कह सकती हूँ। ऐसे भी हो सकती है अनुभूति, स्मृति और अतीत हो जाने के बावजूद मैं बार बार वहां पहुंच जाती हूँ। उसे शब्द रूप देने की कोशिश में मग्न हो जाती हूँ। कुछ हद तक सफल होती हूँ तो काफी हद तक असफल होती रहती हूँ। यह असफलता शायद सभी कवियों के नसीब में होते हैं। इस नसीब को भोगते चलना ही नियति है। अनुभवों को व्यक्त करने, भावों को प्रकट करने के लिए सटीक शब्द पाने का संघर्ष मेरे अंदर अनवरत चलता रहता है। हाँ, कविता सच्चाई प्रकट करती है। उस सच्चाई का स्वरूप क्या है, कैसा है? कवि ने जो देखा, जैसा देखा, क्या वैसा ही? नहीं, कदापि नहीं। कविता के लिए एक समर्थ काव्य भाषा भी चाहिए। हालांकि कविता सत्य को ओट में या गोपनीय रखती है और उसे आविष्कार करने के लिए पाठक को उत्साहित करती है। जो पाठक कविता से सीधे सीधे अर्थ पाने की चेष्टा करता है वह अधिकतर निराश ही होता है। इसलिए कविता का सत्य एक रूपांतरित सत्य है। कविता से मैंने सीखी है जीने की कला। तमाम दुर्घटनाओं, तहस नहस के बावजूद चुटकी भर मुस्कान पकड़े रखने का मंत्र और साहस मेरे पाँव को बल देती है कविता। हृदय को, आत्मा को धैर्य, आंखों की पुतलियों को उज्जवल साहस। इसलिए कितनी ही लंबी राह क्यों न हो, मैं अकेले चल सकती हूँ, अविराम, अविश्रांत। वो राह तब्दील हो जाती है कविता में। नहीं, अन्य किसी पार्थिव मोह में पड़कर पंछी की तरह मैं फुर्स से उड़कर नहीं जा सकती कविता को छोड़कर, बल्कि पड़ी रहती हूँ प्रतीक्षारत और अन्यमनस्क। वह अन्यमनस्कता शून्य आसमान से विस्तारित है। वह शून्यता ही कविता है।
आंखों की पहुंच से दूर का एक आसमान, अनुभव का, चकित उपलब्धि का, एक न बुझने वाली तारे का आसमान ही है कविता। कहीं वह तारा मेरी तमाम आयु की एक नन्ही सी उपलब्धि तो नहीं। मुझे लगता है कि हृदय न हो तो कविता नहीं लिखी जा सकती, निष्ठा न हो तो भी। ठीक उसी तरह विशुद्ध आवेग, अंतर की शुद्धता, अन्यमनस्कता, अस्थिरता और पागलपन न हो तो भी, ये सब मुझ में है। कविता में जीने वाले मुझ जैसे हर कवि में है। कविता लिखने के कारण शायद मैंने जीवन को अधिक अंतरंगता से भोगा है, भोग रही हूँ। अर्थ, यश, असफलता, क्षोभ, क्रोध, करुणा और क्रंदन का प्रतिरूप बनकर खड़ी होने पर भी वह मेरा स्पंदन बन गई है। बन गई है स्पंदित क्षणों का स्पर्धित उच्चारण। वैराग्य हो तो भी हृदय स्पंदित होता है। थकान नहीं, आशाएं होती है, संभावनाएं होती है। इतना ही है मेरा वक्तव्य। और इसके पहले मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी, वो भी कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है कविता। केवल प्रेम, केवल शोक, केवल क्रांति, केवल भूख से नहीं बनती कविता। कविता और भी क्या कुछ है, आओ समझाती हूँ मैं तुम्हें। कविता एक खूबसूरत मौत है जो भुलाए जा चुके और खोए हुए ढेरों पुराने शब्दों में कर लेती है लीन हमें। कविता एक चमत्कार पाप है जो ले जाती है हमें साल दर साल के अनिवार्य और अवान्तर इलाके से एक नई पुलक और प्राप्ति की ओर। कविता एक सल्लज स्मृति है जो किसी भी उम्र में, पल में, वर्षा की प्रथम स्पर्श सी भर सकती है सिहरन स्नायु में। कविता एक अभिनव सपना है जो रात बीत जाने पर भी रुचि रहती है आँखों में, चकित कर देती है उपलब्धि का स्तर। जबकि असर लगते पाप, अबूझ लगती मौत, अदृश्य रह जाती लाज, अगस्त्य सपनों में भी अधिक बहुत कुछ है कविता, आओ समझाती हूँ तुम्हें। कविता इंसान की गहरी मजबूरी को कुरेद कुरेद कर बनाती है थोड़ी सी जगह, खुद को बीज बनाकर बो लेती है, फिर पेड़ बनकर फूल फल से लद जाती है, सहारा बनती है भरोसा। कविता कभी न बुझने वाले तारे का आसमान है। आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब गायत्री बाला जी। और अब मैं अंत में न्योता देना चाहूंगी मोहन हिमथानी जी को कि कृपया करके पोडियम पर आएं और अपने विचार हमारे साथ बांटें। नमस्कार आदरणीय मंच प्रभा वर्मा जी और आदरणीय हमारे श्रोता सुधीजन और कविता प्रेमी, आप सबका स्वागत है कविता के इस समय में। अभी हमारी कवित्री बहन ने प्रेम की बात की। कविता प्रेम भी नहीं है, कविता शोक भी नहीं है। कुछ यही बात मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा। कहाँ हो आजकल कविता, कहाँ हो आजकल कविता, कविता किथे आई अजकल। कविता का स्वाद अपनी भाषा में देने के लिए थोड़ा बहुत मैं अपनी भाषा में भी बोलूँगा। किथे आही अजकल कविता, मुंहिंजी कविता ॻोल्हियां पियो तोखे हर पल, ॾिसां पियो तोखे ख़बर आहे। तोखे ख़बर आहे पंहिंजे पीउ खे कष्ट में व्याकुल मौत जे इंतज़ार में देह छॾण लाइ मौत ॾांहुं वेंदे पल पल ॾिसां पियो मुंहिंजे मिठी कविता किथे आहीं। ॻोल्हियां पियो तोखे हर पल, ख़बर आहे तूं इते ई किथे आहीं, तूं इते ई किथे आहीं पासे में, तब तोखे ॻोल्हियां पियो, तब तोखे ॻोल्हियां पियो। कहाँ हो आजकल कविता, ओ मेरी कविता, ढूंढता हूँ तुम्हें हर पल, तुम्हें पता है देख रहा हूँ आजकल अपने पिता को कष्ट में, अपने पिता को कष्ट में, मृत्यु के इंतजार में, मृत्यु के पास जाते पल पल। पता है तुम यहीं कहीं हो, पता है तुम यहीं कहीं हो, मुझसे बात कर रही हो,
फिर भी न जाने क्यों ढूंढता हूं तुम्हें हर पल, हर पल। हाँ दोस्तों, कविता के प्रेमियों, कविता कवि की प्रथम प्रेयसी है। कविता कहीं न कहीं उसकी सांस में बसती है, रहती है, तभी कवि के मुख से निकला हर शब्द कविता लगता है। कवि बोलता है, हंसता है, मुस्कुराता है, गाता है, शोक में भी वह सब कवि मुख से निकला शब्द कविता रूप ले लेते हैं, जो हृदय से निकलते हैं। कहने की जरूरत नहीं, कवि जब मौन रहता है, कवि जब मौन रहता है तो उसकी सबसे सशक्त कविता होती है, वह उसकी सबसे सशक्त कविता होती है। हाँ, कविता मेरे लिए प्रेयसी से संवाद है। कविता मेरे लिए प्रेयसी से संवाद है। एक तरह के, जब हम कविता करते हैं, कवि उसमें जो है प्रेम से, मैं समझता हूँ कि प्रेम जो है, चाहे आप कितने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ें, पुराण पढ़ें, वो ढाई आखिर प्रेम का ही आपसे कविता करवाता है, वही उसमें प्राण डालता है। अन्यथा शब्द मात्र शब्द रह जाते हैं, शोर मचाते शब्द। जब तक उसमें प्रेम का, भावना का, संवेदन मन का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हमने देखी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे मंत्रोच्चार से हुई, उसी प्रकार कविता कविता तब बनती है जब उसमें प्रेम, संवेदन मन की जो है प्राण बसते हैं, जो शब्दों में ढल कर विश्व संवाद बन जाता है। दोस्तों, कविता के बारे में बात करते हुए पहला सवाल यही उठता है, कविता में आखिर कविता है क्या? हालांकि कविता के बारे में बात करने वाला यह शख्स ऐसा कोई मकाम नहीं रखता जो दावे से कुछ कह सके। हाँ, इतना जरूर कह सकता है, जो जान सका है, एक संवेदनशील मन शख्स कवि मन है। वह संवेदन मन ही एक कवि या कलाकार को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह संवेदन मन कविता की सूरत में कुदरत, प्रकृति और जिंदगी से बातचीत का एक सॉफ्टवेयर है, माध्यम है, संवाद का, मेल मिलाप का, जो इंसानी मानव मन को सदियों से रास आता है। अपने अंदर या बाहर बिखरे सौंदर्य को, अपनी बात अपने लहजे में दूसरे तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम, सॉफ्टवेयर है कविता। कॉलेज में विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन के दिन हों, हालांकि आज भी विद्यार्थी प्रवृत्ति स्वभाव में ज्यों की त्यों है, या आज का दिन जब कविता के बारे में आपसे संवाद हो रहा है, कविता आरंभ से ही एक प्रेयसी से संवाद रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम अज्ञे, या फिर हरिवंश राय, फिराक साहब, पाब्लो नेरुदा, महमूद दरवेश, शेख हयाज, नारायण श्याम, अर्जुन हासिद, वासिम मोई साहब, यहाँ तक कि आज की कवित्री तस्लीमा नसरीन, अनामिका, कविता एक प्रेयसी प्रेमी के साथ संवाद ही मालूम होती है जब हम सबको पढ़ते हैं। आमतौर पर हाफिजा इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी जाने कैसे अज्ञे की कविता एक एमए के दिनों में याद रह गई। दृश्य जो है उनका एक अंकित है, वर्षा में वसंत की मैंने देखा, वर्षा में वसंत की मैंने देखा, छाता एक एक बरसाती, दोनों साथ साथ जाते बतियाते, दोनों साथ साथ जाते बतियाते। कुछ संवाद हम देखते चलें, उनका स्वाद लेते चलें। मेरे प्यार की खुशबू वसंत के फूलों से चारों ओर उठ रही है, यह पुरानी धुनों की याद दिला रही है। अचानक मेरे हृदय में इच्छाओं की हरी पत्तियां उगने लगी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। एक दुख था, एक दुख था जिसे सिगरेट की तरह मैंने खामोशी से पिया, एक दुख था जिसे सिगरेट की तरह मैंने खामोशी से पी लिया। राख से गिर पड़ी केवल कुछ कविताएं, जिसे मैंने झाड़ दिया था। अमृता प्रीतम जी। दोस्तों, आप उस तरह तो न करी मरिए, दोस्तों आप उस तरह से तो न मरिए जैसे मरते रहे हैं अब तक। मेरी विनती है, अभी न मरें, एक साल तो रुक जाएं, एक साल तो रुक जाएं मेरे लिए, एक साल, केवल एक साल। फिर हम साथ साथ सड़क पर चलते हुए बात करेंगे, एक दूसरे से, समय और इश्तिहारों की पहुंच से परे। महमूद दरवेश। तुम जब भी याद आई, तुम्हारी जगी हुई आंखें याद आई, तुम जब भी याद आई, तुम्हारी जगी हुई आंखें याद आई, जो किसी किताब पर झुकी होती थी। तुम्हारी नसों पारा हाथ याद आया, जिसमें टूटे हुए ढक्कन वाला पेन होता था। तुम्हारे पांव याद आए, जिनकी एड़ियां फटी होती थी। तुम जब भी याद आई, टुकड़ों टुकड़ों में याद आई। वास्ते मोही जी। ये कविताएं कवि का उसकी प्रेयसी प्रेमिका के साथ संवाद ही तो है। कवि का सुषुप्ता अवस्था में भी कविता के साथ संवाद होता रहता है।
कविता को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और हम किताब सराहने रख देते हैं। और ये क्या है, कविता के साथ अपनापन ही तो है। कहने की जरूरत नहीं कि तभी कभी कभी मन कह उठता है, ढूंढता हूं अंदर बाहर चलते होते शोर में। ढूंढता हूं कविता तुझे अंदर बाहर चलते होते शोर में, दिन रात बस चलते चलते थक गए हांफते रस्तों में। चैन के अंदर रहती बेचैनी में, चैन के अंदर रहती बेचैनी में, बिस्तरे पर रखे हुए तकियों तले दबी खामोशी में, ब्याहन हेठा दबिल खामोशी में। पता नहीं कहाँ रखकर भूल गया हूँ, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गया हूँ। ढूंढ रहा हूँ काश मिल जाए कविता, पता है मुझे यहीं कहीं है, खबर आहे मुखे ते किथे आहे। तदेव गोल यहाँ पे वो कविता तो के। इस तरह कविता लोगों के अंदर कहीं किसी गहराई में छुपी हुई भावना बात को व्यक्त करने, टूटन फूटन का उपचार इलाज करने का साधन है, सॉफ्टवेयर है। अपने आप को खोजते रहने का, अपनी तलाश जारी रखने का। कवि की यही बात, कवि की यही बात कविता बन जाती है, क्योंकि वह लोगों की बात करता है। लोगों की बात अपनी जबान में करता है, अपने लहजे में करता है, उनकी भावना को अपने शब्द देता है, अचेतन को चेतन मन तक पहुंचाता है। यह काम कवि अपनी प्रेयसी या प्रेमी के संवाद के साथ ही कर सकता है। कलाकार या कवि के लिए उसकी कला कविता एक शरण स्थली है। मेरा मानना है कि कवि या कलाकार को जब भी ये अपनी मिस करता है अपने साथ संवाद को कविता की, वो बाहर निकल जाना चाहता है कहीं दूर अकेले में। इसलिए हमें ये शरण स्थली लगती है, पनाहगाह का काम करती है, जहां उसको अपने कठिन या विपरीत समयों में शरण मिलती है। जैसे थके हुए मुसाफिर को रात को आरामगाह की जरूरत होती है। कोई रंगों में अपनी पनाह ढूंढता है, तो कोई स्वरों में, कोई गीतों में, तो कोई नृत्य में। हर रचनाकार अपनी रचना के लिए इन पनाहगाहों के जाने के लिए आतुर होता है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र शायर, बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, नसरुल नवीस, और बहुत अच्छे लक्ष्मण कोमल जी। उन्होंने आत्मकथा लिखी है, बही खाते के पन्ने, बही खाते जा पन्ना। उसमें उन्होंने इस बात पे अंडरलाइन करके ये बात कही है कि मेरे को खाने के बगैर मैं रह सकता हूँ, शराब के बगैर मैं रह सकता हूँ, लेकिन किताब और कलम के बगैर मैं नहीं रह सकता। और एक बार उन्होंने अपनी आत्मकथा बयान करते हुए एक जगह लिखा है कि यूं ही अपनी इस बेगानी स्थिति में, बेगानियत की स्थिति में, स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस में, मैं सुबह 4 बजे उठा और मिसिस के सराहने के पास पर्ची रख के चला गया कि मैं घर से जा रहा हूँ और मैं लौट आऊँगा 10-15 दिनों में, चिंता मत करना, अपनी खबर देता रहूँगा। और वो स्टेशन पर पहुँच गए, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, दिल्ली के रहने वाले थे। और वहाँ क्लार्क को बोलते हैं कि मुझे कोई भी पहली गाड़ी जा रही है उसका टिकट दे दो, कोई भी पहली गाड़ी जा रही है उसका टिकट दे दो। क्लार्क उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसने समझ लिया कि ये कोई पहुंचा ही आदमी लगता है, ठीक है, टिकट दे दिया। और वो टिकट लेके किसी पटना बिहार वाली गाड़ी में बैठ गए और खूब अपना घूमते फिरते रहे 10-15 दिन, कानपुर, प्रयाग, 10 काफ़ी शहर घूम के वापस आए। तो अपने साथ लाए उनकी अमर रचना भई खाते जा पन्ना। तो कहने का मतलब है वो अपनी शरण स्थली में ही ये रचना का निर्माण करते रहे। तो ये एक कविता सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है। कविता में प्राण, संवेदन, मन ही डाल सकता है, और वो कलाकार ही कर सकता है। और उसके साथ वार्तालाप जब तक नहीं करेगा, अपने अंदर जो चल रहा है उसके साथ वो निकालेगा नहीं, वो उसको शब्दों को कविता का रूप या कोई कहानी का या कोई और रूप नहीं मिल सकता। और वो इस बात को रियलाइज मुझे तब हुआ जब हम में ये स्थिति आ जाती है, और वाकई हम भी निकल जाते हैं। मैं खुद निकल जाता हूँ 1-2 दिन के लिए या दिन भर के लिए कहीं भी जाके अपना समय व्यतीत करता हूँ अपने मन के साथ या अपने कवि मन के साथ। तो ये चीज़ अब रियलाइज हो रही है। मैं खुद सोचता था ये कैसे लिख दिया इन्होंने, ऐसे ही निकल के बैठ गए गाड़ी में, चलो भाई कहीं भी चलते हैं। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर, यहाँ जो जने बैठे हैं या कैसे भी कोई ऐसे जाता होगा बिना किसी प्लानिंग के। लेकिन वो आदमी ने लिखा है तो वो बिल्कुल सच 100% सही लिखा है। एक कवि, एक शायर मन की जो रेस्टलेसनेस वाली स्थिति होती है, वही एक कवि की स्थिति होती है। यायावरी, इसके लिए मुझे भटकना बहुत पसंद है। वो कहते थे यायावरी, इसके लिए मुझे भटकना बहुत पसंद है। और
वही उसका पनाहगाह है, जहां पहुंचकर वह सुकून पाता है। अपने शब्दों में, अपने लहजे में हम अपनी बात करता है। इसलिए वह कह उठता है, ढूंढता हूं तुम्हें फुर्सत में, फिर वही माँ गोलियां पे दोखे किथे रखी विसरी विवाह हम। कविता में ही यह ताकत, क्षमता होती है। जीवन जैसा भी है जीने के लिए है। वह नवजीवन पुनर्जीवन का लुभावना भ्रम बनाए रखती है। वह नवजीवन और पुनर्जीवन का लुभावना भ्रम बनाए रखती है। मुझे यहाँ शायर नारायण श्याम के बोल याद आ रहे हैं, जिंदगी जहड़ी बाए पोए बजाय जीण जिया है। जिंदगी जहड़ी बाए पोए बजाय जीण जिया है। ये जिंदगी जैसी भी है, फिर भी जीने की जगह है, वजह है। फिर भी जीने की जगह है, वजह है। इसलिए कवि मन बार बार कह उठता है, ढूंढ रहा हूं तुम्हें गोलियां पियो तो खे, ढूंढता हूं तुम्हें ड्राइंग रूम में, बोलती तस्वीरों में, किताबों पर हंसती हुई चढ़ी गर्द में, धूल में, उनमें लिखे हुए लफ्जों में गुम हो गए अर्थों में। उनमें लिखे हुए लफ्जों के गुम हो गए अर्थों में। मोबाइल कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपना फ्यूचर तलाशती उंगलियों में। सुबह शाम लोकल ट्रेन में, लोकल मेट्रो में, घंटों सफर करते, एक दूसरे को ताकते चेहरों में। बालकनी में आकर बैठती गोरैया चिड़िया की गुम होती उड़ान में। पिज्जा बर्गर हॉट डॉग की बेइंतहा खुशी में, डब्बे में पड़ी सूखी हुई गेहूं की रोटी में। ढूंढता हूं कविता, ढूंढता हूं तुम्हें कविता। आओ हम बैठकर कुछ लम्हा बातें कर लें कंफर्टेबली। शायद कुछ सालों बाद हमें इतना समय न मिले, ना ही हम एक दूसरे को टॉलरेट कर पाए। आओ कुछ समय हम बैठकर बातें कर लें। तेज रफ्तार दौड़ते रस्तों के किनारे अतीत फटी हुई चादर पहन के सुबह के रो रहा है। दौड़ते तेज रफ्तार रस्तों के किनारे अतीत बैठा सुबक रहा है, फटी चादर ओढ़े। वर्तमान परिस्थितियों में के बस में, जाल में फंसा, इमारतों पे चढ़कर अट्टहास कर रहा है, हंस रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है। और भविष्य ने भ्रष्ट शब्दों के अर्थ खरीद लिए हैं। भविष्य की भ्रष्ट सोच ने शब्दों के अर्थ खरीद लिए हैं। भावना बेलिबास होकर, भावना का शत विशत बेलिबास शरीर हवाओं से ढककर भावना जंगल की ओर निकल पड़ी है। यही संवाद है कविता। आओ हम कुछ देर बैठकर बातें कर लें। आओ हम कुछ देर कर बैठे कर लें। अंत में मैं अपनी बात को विराम बस देना चाहूँगा, समय भी हो गया है। कि टिड़न था गुलाब शहर जे शोर में अजब, टिड़न था शहर में शहर जे शोर में गुलाब अजब, कविता जी खुशबू लाई यह दुआ है। खिलते हैं गुलाब शहर के शोर में आज भी, कविता के खुशबू के लिए आज दुआ है, दुआ है। Now we come to the close of the session. Indeed, this session titled What Poetry Means to Me was quite interesting. Not only interesting, this has been very enlightening too. It is rather unfortunate that 4 eminent writers who were supposed to participate in this session are conspicuous by their absence. They have not turned up. Yet 5 eminent writers who figure in the notice, they are here with us, and they have expressed their views and enriched the session with their innovative ideas, original thoughts and all that. And on behalf of the Sahitya Academy and on my own behalf, I express my sincere gratitude for those who have come here, both on the dais and off the dais. With these words, I conclude and say that this session comes to an end now. Thank you. इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2024 में कल आप सभी से दोबारा भेंट होगी। और अपने सभी स्पीकर से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आई होप आप लोग रिसेप्शन पे ऑलरेडी जाकर यू मे प्लीज गो देयर एंड कलेक्ट योर बैग्स फ्रॉम देयर। और रिसेप्शन पे आपको वहाँ पे जाना होगा। और एक बार फिर से चेयर सर का और आप सभी पोइट्स का, सभी स्पीकर्स का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।
At 7 p.m. there is